Can you guys hear my voice? Can you guys hear my voice and see the screen? Thank you. Good morning everyone. Welcome to the closing session of option classes. We'll wait by for a couple of minutes and then we'll start. 11:04 is the time right now in my desktop, and we will start sharp at 3 minutes later. 11:07. We'll wait by for a couple of people to join in, and then we will start. The agenda for today is going to be a discussion about one other strategy called calendar spreads, standard deviation, and how to what are the trade ideas that you can implement. What are the takeaways, big takeaways that you can take from the class? Each to own, to each their own. सबके पास अलग अलग requirement है. Everyone among you are coming from different. Right now the recording is not on. Okay, so I'm not recording right now till we start the strategy session. Let this be a session only for non-recorded session, because the current session is going to be for firstly on something that I use very closely, like Twitter. And I don't want to get this recorded on how do I use Twitter, because there will be a couple of names involved in this. So we will discuss about Twitter, why this has been helpful in my trading, and how much to avoid and how much to look for when we are using Twitter. Some trade ideas, some strategies, and trading ideas in totality, how, when to use, what to use, whatever we have learned so far. We'll try to cover up those things, and we'll take questions after that. Good morning. Let me welcome you all once again on the closing session of the option classes. Let me start by logging into my Twitter. Today's session will start with what is Twitter and why it has been helpful for me. Maybe that also will become helpful for you also. You guys come from a different background, have different aspirations, trade different styles currently, and maybe you may use some of my lectures into your styles also.
So almost 3 to 4 years back, I started using Twitter regularly. So, and I have been really helped by this Twitter, because at this place, what I found was a lot of really good people. By good people means that people who you really like as an ideal, or as a people who you really want to aspire to be, are here giving you the gyan almost for free. So it's a nice place. So let me show you how I use Twitter. There are two ways to use Twitter. One is twitter.com and another is twitdeck.twitter.com. These are the two ways. Guys, this session is not being recorded currently. Once we start the strategy session, we will start recording. Okay. So this is what my Twitter looks like. I hope a lot of you have used Twitter before or know about. Just so what is Twitter? This is my ID. This is home, notification, messages, how many tweets I've done, how many people I'm following, and how many followers I have. The follower count can keep on increasing and decreasing. It depends on how many people you like. So the first thing you should go to is the search on Twitter. Let's search Mr. Narendra Modi. So you have Narendra Modi and NarendraModi.in. So these are the two accounts that you can follow if you want to follow our Prime Minister, respective Prime Minister. So you see there is a blue tick. There is a blue tick, and for this person, Dr. Narendra Nathan, there is no blue tick. So blue tick means a certification kind of thing by Twitter. I don't know what they call blue tick. Verified account. I don't have it, and there are a couple of criteria that you have to fulfill in order to get a blue tick. Blue tick is is considered to be a very good thing for a Twitter profile. So let's not get into that. But if you want to search for anyone, let's say Narendra Modi or Amitabh Bachchan, for that matter. So you have Amitabh Bachchan here also, and let me see. And you see, 10 hours ago he has tweeted something. Happy New Year, Shubha Navabarsha. 10 hours ago he has tweeted about it. So I don't know how many of you like Mr. Bachchan, but I like him a lot. He is very good in the social media, very active in the social media, I should say. So let's come back to Twitter and find out who are the guys, who are the market participants, and who provide a lot of information, not insights, I should say, insights to different type of style they have. I follow a couple of them. My style, what I seek when I go to Twitter, what I seek is a different something that I am currently doing, not something that I'm currently doing, but a different philosophy or style that someone is following. Let's say I don't know about technical analysis. So I'll try to follow people who know, who are really good at technical analysis and who have been doing their work and showing their work on Twitter on technical analysis. Or I'm not good at following politics, but today everyone is good at following politics. So I'll try to look for people who are good at following politics. I'm not good at understanding who is the guy who has been right in the last elections outcome that you call. So I'll try to find out who is the guy who people look for.
there are a lot of questions that कहाँ से ये information, कहाँ से लोगों को ये insights आती है. So this place has been really good for me as far as insights are concerned. So there are a couple of styles also, like momentum investing. There are a couple of styles like value investing, a deep value investing. A lot of podcasts are there. Self-improvement podcasts are there. So you will find really, really good insights on Twitter. In fact, some of them are here as present. Let me describe about these two guys. Mr. Naresh Mirani, he is a blue tech and he's a technical analyst, techno funda investor. One of the really good guys. I have attended one of his session and really likes what he posts on Twitter. And as far as technical analysis is concerned, he has taught a lot of people, and some of his students are really good. And like it's not about that I'm here to I'm promoting him just because he came on the first of the page. That's why there are a lot of good people. Yashwant Deshmukh, he came on second. He is really good in political scenarios. What are the politics developing in the Indian context? How the politics is developing. So his tweets on those are important to me. So this is the timeline that you call, like this is called the timeline. If you want any Indian related news, there is a ANI that you can follow. This is called timeline. The people you follow, they will keep on tweeting and this will come on your timeline. So let me talk about a couple of accounts that that are really insightful for me. Some people who, as far as options are concerned, let me tell you some of the people that they post a really good thing about options. One is Mr. Mahendra Dave and Akash Kumar. He is a guy from Delhi. He is an option trader. He keeps on posting a lot of good things about options. There is Tasty Trade also. Every good, a lot of good people on the option segment are here only. In fact, you can go into my following list. This is my following list. This is the people who I am following. You can go into the list and check out their profile. They'll keep on saying that Christopher Voss, he's an FBI negotiator, is a writer of Never Split the Difference. So some 7 best negotiation book. So you can follow as per the going into my following profile and who the people I am following. If you like them, follow them. Don't like them, don't follow them. Some of the people you should be following are people who are giving you the news anchors, so that if you miss them, at least you can go back to them and what the news was exactly. So currently, if you want a banking analyst, some of the very good banking analyst is Abhishek Kothari. He's really good banking analyst. His analysis about the banking sector is really good. Mangalam Malu. So all these guys you see on the CNBC and you get their updates there. You can follow the news channels, CNBC TV 18 or Bloomberg Quint or Z Business. Any person that you want are there. They keep on tweeting about their updates and you can put them into your notifications. Like let's say Mangalam Malu, I go to his profile. So I have him as a mobile notifications. So currently this is called turn off mobile notification. So my mobile notification is on for this person. So whenever he tweets, it comes into my mobile as a message. So these are a couple of things that you can do with Twitter. Helps me a lot. While my trading screen is on, I keep on this this is called Twitter deck. So you can keep on concentrately following these couple of peoples.
let's say I am following Darshan Mehta in this. So Darshan Mehta, whenever he tweets, it will come on my profile. So only Darshan Mehta in this, and then there is Sun Chartist. He keeps on speaking about macro analysis. So you see there is 3-month S&P. He's talking about Hong Kong dollar, Forex, Hong Kong. You have no, they are you are following them, and you have to just add them. Let's say you want to add a column with user and put, if you want to follow someone, let's say you add a column here in this place. You just want to follow, let's say Amitabh Bachchan. You added them and add a column, put a name SRBACHHAN and search about him. So that will arrive. He is not the right, because there is no blue tick about him. So I don't. Yes. You just click on them, Amitabh Bachchan, Senior Bachchan, and you just add the column. So once the column is added, Mr. Bachchan, whenever he tweets, he will come on my tweet deck. So here I am following currently Mangalam Malu, Mr. Donald Trump, the biggest mover of the markets, and couple of people. So then I will not get any other feed from any other places. So concentratedly, you can follow a couple of people, and you can at least, if you want to follow just the news only, so follow CNBC TV 18, the G Business, and Bloomberg Quint. Your feed is enough. You will get enough feed there as far as the news is concerned for your managing your news flow. The interpretation part is yours. The interpretation part is yours. I follow a lot of fundamental the people who are really good at fundamentals, because there are two parts that I'm not good at. One is fundamental and another is technical. So you will find a lot of people who are from that stream of fundamentals and the stream of technical analysis to take their insights. This is about Twitter. The good people, the people who you can follow if you want to learn options deeply is, as I mentioned, Option Alpha. And you just write on option. This is optionalpha.com and their tweet handle Option Alpha. One, there is Tasty Trade. This is Tasty Trade. So you can follow them. Tasty Trade has a really good material about options trading. There is Zerodha Varsity also. So you can follow them. Remember, when you are on Twitter, it is really a good place and a noisy place. यहाँ पे लालू प्रसाद यादव भी है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी भी हैं, यहाँ पे बच्चन सर भी हैं, यहाँ पे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस, हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस, whatever you want to find you can find. वो बोलते हैं ना, भगवान से जो चाहोगे वो मिल जाएगा, जैसा खोजोगे वही मिलेगा, गूगल में जो खोजोगे वही मिलेगा. सो जिनको आप चाहते हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे. सो don't follow people who you think are going to create noise in your timeline. Okay. बहुत बार जिनसे इंसाइट मिलती है, जिनसे इंसाइट मिलती है, उनको फॉलो करने से बहुत फायदा होता है कि हाँ ये मेरे को इंसाइट दे सकता है. वो आपको एक बार when you start following them, then only you will understand कि what is there and what is not there.
आप उनको unfollow भी कर सकते हैं. One good thing that happened with me on Twitter was I came to know about this account, which is called Blood Donors India. It works like, it has worked a lot of for a lot of people, and their reach is too big. Their reach is too big. If somebody doesn't know, somebody doesn't have the help in the hospital for the blood, you just have to tweet saying blood donors in, and since he has almost 10 lakh followers, that tweet will go to 10 lakh followers, and somebody will reach out to you. Somebody should. That's one of the ways, one of the best things about Twitter I have found so far. So that is all from the point of Twitter and my journey in the Twitter. You go to my following list, you will find a lot of people. Just keep on clicking each one's profile to find out what is their timeline, and will they inspire you, or do you need their insights, or do you need the information when they give it to you. So that is what my journey in the Twitter was. Really, really, really helpful. You can use that. Okay. Next. So let us start recording the session now. Welcome everyone again. Good morning. So yesterday we were doing ratio spreads. And we started with the price ratios, and we reached till let me open the Excel sheet first. What we did was we had done the price ratios, and we thought of using rule of sticky delta into this to understand how the ratios should be behaving. Okay. This is the easier version for following a ratio trade. As mentioned before, the ratio trade should be seen either one. Agar aapko, let's say in a week you want to square off, if you don't want to keep it for the expiry and you want to square off the trade, then you should be keeping this in mind, and my comparison for the returns should be on the risk per trade basis, not on the capital employed पे आपको निकालना ही है, but risk per trade आपने कितना लिया था वो भी देखना होता है. ठीक है. If you have limited capital, then the idea of doing ratio trade will not be helpful for you, because the returns are, in absolute returns, are too small. Now, there was a question yesterday by someone mentioned, sir, is it not a good idea to concentrate only on index first? Only and only on index first in order to learn options. I'm really happy that someone raised this point, and I agree with him totally. However, I have different ways of saying this. The different ways are, what are the first you have to find the possibility of trades. क्या trades possible है मेरे पास.
first. Second, you have to find are those trades continuous in nature, कि वो trades मेरे को continuously मिलते रहेंगे या नहीं. First question should be, what are the possibility of trades? Second, are these trades continuous in nature? Time frame for each trades, scalability, and capital scalability of trades, capital required, and returns generated. Trades. These are the some of the things that you should seek answer to. Question पूछने चाहिए अपने से खुद से, और once you have the idea of these type of trades, these answers, once you have the answers to these questions, then it becomes really easy to look for situations, to look for possibilities, to look for, then you can approach things differently. Okay, so let me answer them one by one. As I was talking about, let me prepone this topic first, trade ideas. This comes into the various trade ideas. What are the possibility of trades? First, let me talk about instrument wise. You have index and you have stock options. You have index and you have stocks. Index is divided in Nifty and Bank Nifty. Stocks I can divide in large cap, mid cap, because there is no small cap in this, or liquid and illiquid names. So these are the two ways you can think about Nifty, Bank Nifty, large cap, mid cap. Time wise, time to expiry wise, you have weekly, Bank Nifty, expiry, monthly, index, and stock options. And FAR month options on Nifty. FAR month में सिर्फ Nifty options liquid होते हैं, stock option liquid नहीं होते. So you have time to expiry wise. These are the possibilities. This is instrument wise. This is time to expiry wise. क्या-क्या possibility of trades है. Now, another type of possibility is you can take a directional trade and non-directional trade. So, ये सारी possibility मेरे को नजर आती है. अपना अपना comfort खोजना है. कौन किसमें सबसे ज़्यादा comfort है? Volatility based. Non-directional is volatility based. So wherever you are comfortable, wherever you can think, you can think in terms of let me start with this. I'm happy with this. I'm okay with this. And then you keep on growing with that. As far as style is concerned, this is style wise, I should say
style wise. Once you have arrived at these things, now you should be looking for, are these trades continuous in nature? ऐसा, और what is your time frame that allows you? आपका time frame क्या allow करता है आपको? There are some of you who can trade only 9 to 11. There are in the group, we have people who can only trade from 9 to 11, and there are someone in the group who cannot trade from 9 to 11, but they can trade from 12 to 3. They cannot trade from 9 to 12, but they can trade from 12 to 3. And there are some people who want to just understand options, take position against their holding or something like that. Or there are people who really want to be a day trader or trading in and out of the market, looking at the screen daily. There are people in the group. So for everyone, to each their own. किसको क्या suitable करता है, अभी तक आप क्या करते आ रहे थे, इसमें क्या क्या कर सकते हो, you have to segregate. ये segregation आपको चाहिएगा. So first you need to look, are these trades continuous in nature, or and if they are continuous in nature का मतलब हुआ, first जैसे मैंने कहा कि कल अपने discussion किए थे about the Infosys trade, which comes or the earnings trade come only in the earning season. At least एक महीना तो गायब ही रहता है earning season. तो season नहीं होता उस समय you need to do something extra to find trades. जिस समय earning season होता है, then आपका वो season चलता है. निफ्टी बैंक निफ्टी है, इसमें कोई अर्निंग सीजन नहीं होता है, ये कंटिन्यूस इन नेचर है. आपके पास निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर लेट्स से let me put this combination to you. If you have Nifty and directional combination, or Bank Nifty and directional combination with you are comfortable with that, then that is fantastic for you. Keep on trading that. You don't look for other things. उसमें आपको, then you should concentrate on that part only. But if that is not your forte, if that is not something you want to develop, because they keep on moving, you have to look them very closely in the market. Okay, so if that is not your forte, that is not you want to develop, then there are other choices also. What are those choices? These are stock options. These are you can go into 4-month expiry. So these are the choices available. So continuity in the nature, you understood. One is a earnings trade, another is a Nifty bank Nifty trade, which is going to be continuous. You will be glued to the charts or screen or whatever the news is. The third thing that should come into your mind, what is where will I get the support that is needed in order to trade my style? चाहे वो directional हो, चाहे non-directional हो, what are the things that I really need in terms of data? What is it that I need that will support my views or support my thought process or support my understanding of the things better and better? Those who are trading directional, they will need charts. If you are trading directional, you will need charts, or you will need a good market understanding कि market यहाँ से तेज लगता है या market यहाँ से मंदा लगता है, उसके लिए वो एक view चाहिएगा. And those who are looking for non-directional trades are only based on volatility. There's nothing else. You have position on volatility. So what you need is a data on volatility. You don't require the data on direction, that is charts. You require a data on volatility. What had been the volatility? What is the current volatility? Is volatility high or is volatility low? That's what you require. So volatility data, now that becomes a challenge to get.
where do I get the data on volatility? Couple of places. One is if you are looking for data vendor wise, who first let me talk about the three places where you get the data, these data. One is capitalmind.in, another is traderslaunch.in, third is I don't see. I don't see anyone who provides data other than these guys for free. So these are two guys who provides data for free and doing a lot of good work there. So you directional you need charts, non-directional you need volatility data. What is the volatility? What is not the volatility? So currently, if you require, let's say you are looking for a non-directional trade and you are looking for trades on the volatility historical data, historical IV data. So I currently am using, as I mentioned, MyFNO. I have a basic version which cost me almost 6,000 a year. So I have this basic version which cost almost 6,000 a year. What I'm going to show you is the basic version only today. So what does it do? If I want to check the volatility historical for anyone, not the scanning part, but I want to check the specific stock part, so I can go to charts, put the charts there, and let's say I click on Maruti and do a 1 year chart and show me the IV, and the IVs will be there. And you find कि 1 year में IVs कब बढ़ी है, कब गिरी है, कब बढ़ी है, कब गिरी है. Find the dates of their results, and you know the drill now. So far you know the drill, how I have processed. This is, you have to go, there are 200 stocks only, nothing more. You just have to click on these this column 200 times in a day, and it's easier. No, nothing to work. You will not get the scan part of ranges. क्या range चल रही है अभी volatility की, क्या नहीं चल रही है from this place. But at least you have the charts and it is giving you the volatility data. What that is the comparison that in the ranges they are doing. Another is this option screen that I use. This is also available there. You go for stocks group. And show lots. And this is one way. MyFNO you have seen. Yeah, I don't need to push a lot on MyFNO. The next is NSE Bhav Copy and NSEindia.com. Yesterday we showed how you can pull the NSE India live option market page into Excel sheet. And once you have that Excel sheet, you can link that Excel sheet to the Delta Vega Theta Gamma Rho sheet and do your work. You have Bhav Copy also from here. You do that analysis in the Bhav Copy. It's easier. It's not going to be very tough, I guess. Let me do that for you once. In my in the days when I didn't have this MyFNO, then we used to do Bhav Copy analysis from this place only. So you put the filters there. जिसको नहीं भी आता है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं सीखने का दरकार है, आपने फिल्टर लगा दिया
बस इस पे थोड़ा सा समय देने की जरूरत है. फिल्टर लगा दिया, let's say, and you want to check for what? You want to check only for the expiry of those 2018 April expiry. You look for 26th April expiry only, and you want only the stock options. Sorry, stock options. And currently you are looking for name. Just give me a name. LT. So I'm looking for, I have an expiry date of 26 April, LT, futures data and options data. That's all. मेरे को call देखना है, I will filter the call option. मेरे को put देखना है, I will filter the put option. I go to change in open interest, doing the largest to smallest. So I see where the large changes have happened in the LNT. Where is the highest open interest in LNT? LNT has 1400 call option, it has the highest open interest. So those who want to do it manually also, नहीं भी आता है आपको Excel sheet, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं. Excel में pivot table भी बना सकते हैं आप. Pivot table से तो ये पूरे analysis बहुत अच्छे से हो जाएगी. So this is a data NSE currently is giving you for free. I don't know when NSE starts charging for this. So it is giving for free and you can use this data for your analysis. Excel थोड़ा ठीक से समझ जाइए और आप इसको आराम से कर सकते हैं. You don't need MyFN also. Now, once you have decided on which type of data to work on or which type of trades you want to work on, you need to find the time frame for trades. Which time frame you are comfortable. As I mentioned, some are morning traders, some are evening traders, some are day traders, and some are positional traders, swing traders. There are different names. Trade as per whatever suits your style, trade as per whatever suits your time. Scalability of trades. This is an important part. All of us, even if you're trading or not trading or whatever your objective for the class is, everyone wants to scale their good trades. हम लोग सबको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो लगाने के लिए आए अपने ट्रेड्स में. जो करंट ट्रेड्स है, जो करंट एपेटाइट है, उस पे एक एक्स्ट्रा जीरो लगता जाए. So that is called scalable part, and that is why we all are here in this profession or learning about this industry at all. So where are those things available in the market? First, index is that part. Index में आप जितना चाहो उतना स्केल कर सकते हो अगर आप सही हो तो. As far as मतलब आपके एपेटाइट की कंसर्न है. But if you are looking to scale up in, let's say, DCB bank, तो आपको उतना ज़्यादा scale नहीं मिलेगा. But if you are looking for scale in the ICICI bank, you will get that scale. Scale requires liquidity. Scale requires liquidity and your back testing and your risk appetite. कि आपने बैक टेस्ट अच्छे से किया हुआ है और आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, तो आप 70 रुपए में इन्फोसिस का स्ट्रेडल 1 तारीख से बहुत अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हैं. एंड यू कैन थिंक ऑफ एंजॉइंग द मूव एंड सो ऑन सो फॉर्थ. कुछ भी वो पॉसिबिलिटी जितनी है वो अपने डिस्कशन कर सकते हैं. एज मिस्टर नितिन कामत मेंशन्ड, trading volatility is easier than trading direction. I agree to that. I agree to his logic, but it is not easy to trade volatility. To first understand volatility, and once
The easy part, why it is not easy? Because we don't give as much time to it in order to understand it. इसमें थोड़ा समय देना पड़ता है। मेरे ख्याल से वो इन्फोसिस वाले ट्रेड में we were actually looking at those prices only. That is why we were able to understand things. In fact, we didn't see any other straddle prices. निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, we were not looking at anything else. So scalability requires your total focus. अगर आपको डायरेक्शनल भी मिल रहा है, डायरेक्शन में भी you are comfortable, you can scale up. कोई ऐसी बात नहीं, स्केल अप नहीं होता उसमें। अगर डायरेक्शन में अगर आप स्केल कर सकते हो तो उससे बढ़िया कोई ट्रेड ही नहीं। अब वो डायरेक्शन आप वोलेटिलिटी का भी ले सकते हो कि वोलेटिलिटी यहाँ से बढ़ेगी या वोलेटिलिटी यहाँ से गिरेगी। दैट इज आल्सो अ डायरेक्शनल पार्ट। The next comes is capital required and returns generated in trades. Capital required, let me come to that first. If you are buying options, the capital requirement and returns generated is something that nobody in the world can beat. That's my promise to you. अगर आप बाई करके ऑप्शन बाई करके इंट्राडे में पैसे कमा रहे हैं तो आपका रिटर्न परसेंटेज को तो कोई नहीं बीट कर पाएगा। परसेंटेज को, एब्सोल्यूट को मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज। सो capital required is least in option buying, but that is the toughest thing to make money. Buying option and making money is tough. Doing it a continuous basis, I'm not saying it's not possible, doing it on a continuous basis is tough. So, and when you come to selling option, it requires the similar margin that is required in the futures also. मार्जिन दोनों में एकदम सेम रहेगा, फ्यूचर्स में जितना लगेगा उतना ही ऑप्शंस में भी लगेगा, सिमिलर इफ नॉट सेम। तो अगर वो रहेगा तो देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग द रिटर्न्स ऑफ फ्यूचर्स वर्सेस ऑप्शंस। ट्राई नॉट टू डू दैट, ट्राई नॉट टू डू दैट, बिकॉज फ्यूचर्स में आपका रिस्क पर ट्रेड और ऑप्शंस में आपका रिस्क पर ट्रेड हैज फार डिफरेंस, वेरी बिग डिफरेंस। सो इनफैक्ट ऑप्शंस में जब आप सेल करते हो तो आप उसको कोई भी एक स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो स्ट्रैटेजी में कन्वर्जन के बाद उसका रिस्क रिवॉर्ड टोटली चेंज हो जाता है। So what you should be thinking when you are trading options, remember the futures naked position will give you the best returns of your capital, best and worst return of your capital. Option naked will give you good returns but not as good as futures. Option in strategy will give you lesser returns but will have lesser amount of risk. So choose your strategies in those manner. ठीक है? What is my preference? If you ask me, my preference is a khichdi of this. My preference is a khichdi of this. If you ask me, I trade for 5 paise also, I trade for 500 rupees also. Direction also, non-directional also. But the position sizing in options, non-directional part is far greater than directional part. Hope you can understand. Hope you understand my what my trading book will be. So
There's one more strategy that we are going to focus today. That is called calendar spreads. And then we'll talk about standard deviations. Calendar spread, as the name suggests, you buy into 1 month, you sell into another month. One is a spread and another is a calendar. So there are two different dates. Two expiry dates. Buy one and sell another one. That makes a spread. So two different expiry dates and you buy one and sell another one. That is called calendar spreads. फ्यूचर्स में तो होता ही होता है, फ्यूचर्स में तो इसके स्प्रेड भी क्रिएटेड है, ऑप्शंस में भी अपने कैलेंडर स्प्रेड्स करते हैं. कैलेंडर स्प्रेड्स ऑप्शंस में करने का मतलब है जो नेचुरली एक द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू माइंड, लेट्स से अभी 10,500 चल रहा है, राइट नाउ इट इज 10,500, you sell current month contract and buy next month contract. That's called long calendar spread. That's called long calendar spreads. ठीक है, शॉर्ट इसका उल्टा हो जाएगा, शॉर्ट इसका उल्टा हो जाएगा. ठीक है, टाइम वेस्ट हो गया. सर विच स्ट्राइक टू चूज? स्ट्राइक कौन सी चूज करें? यू रिमेम्बर द बटरफ्लाई रीजनिंग? अच्छा, we'll do a quick revision of all the strategies today. After this, we'll do a quick revision of all the strategies also. कि कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं. So we will do that a quick revision of the strategies. Strike price, same strike price भी रख सकते हो आप. You can keep the same strike price. और कॉल की जगह पुट नहीं बेचना है. लेट्स से एक मंथ का कॉल बेचा, दूसरे मंथ का पुट बेचा, वो नहीं करना है. कॉल बेच रहे तो कॉल से कैलेंडर होगा, पुट बेच रहे तो पुट से कैलेंडर होगा. ठीक है, सो यू कैन सेल द सेम स्ट्राइक प्राइस आल्सो, यू कैन सेल द डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस आल्सो. जनरली वी सेल द सेम स्ट्राइक प्राइस. इफ यू सेल द डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, दैट इज कॉल्ड डायगोनल. दैट इज कॉल्ड डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड्स. What is the reason behind doing a calendar spread? क्यों आपने करंट मंथ बेच रहे हैं, नेक्स्ट मंथ खरीद रहे हैं और सेम स्ट्राइक प्राइस का काम कर रहे हैं? What is the objective here? What's the objective of doing this trade? The objective is similar to what the trade objective was in butterfly. What was the objective in butterfly? I want the underlying to come to my middle strike price slowly. Want the underlying to come to my strike slowly. ऑब्जेक्टिव यही रहता है. मैं धीरे धीरे चाहता हूं कि अंडरलाइन धीरे धीरे मेरे स्ट्राइक की तरफ बढ़ता जाए. क्यों ये चाहता हूं धीरे धीरे हो जाए?
मैंने करंट मंथ बेच के रखा हुआ है और फार मंथ खरीद के रखा हुआ है। तो करंट मंथ में आई एम शॉर्ट इन दी मार्केट, लेट्स से आई एम डूइंग इट इन कॉल, ठीक है। करंटली मार्केट इज एट 10,500, so let's say I sold 10,600 call current month and bought 10,600 far month. Sell current, buy far month. 10,600 का कॉल मैंने बेचा और 10,600 का अप्रैल बेच के मई खरीद लिया मैंने। क्या मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? आई वॉन्ट द अंडरलाइन टू कम टू माई स्ट्राइक प्राइस स्लोली। मैं क्या चाहता हूं कि निफ्टी धीरे धीरे बढ़ के 10,600 पे आ जाए, ठीक है। क्यों ये चाहता हूं? बिकॉज इफ निफ्टी कम्स ऑन एक्सपायरी निफ्टी इफ बिकम्स 10,600, तो इसकी प्राइस हो जाएगी 0, this price will become 0 and this will have the best price available. नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ में प्राइसेस तो रहेगी, द बेस्ट टाइम वैल्यू अवेलेबल इन दिस, इससे ज्यादा टाइम वैल्यू किसी का नहीं रहेगा। सो योर करंट मंथ इज गॉन, has gone to 0 and you have the best time value available in this, ठीक है। so that is my objective, that is my objective for the trade. I want the underlying to come to my strike price slowly. Now let's say you did a calendar spreads today, you put a calendar spreads today, ठीक है। आपने 10,600 का कॉल बेचा ऑन फ्राइडे, आपने बेचा और फ्राइडे को ही आपने 10,600 का फार मंथ ले लिया। नाउ 3 days हैव पास्ड, मंडे को मार्केट खुलेगा, 3 दिन बीत गया और मंडे को मार्केट खुलेगा। तो इन 3 दिनों में किसका टाइम वैल्यू ज्यादा गिरेगा, इसका या इसका? करंट मंथ का या फार मंथ का? करंट में टाइम वैल्यू में ज्यादा इफेक्ट आएगा बिकॉज उसको तो जल्दी जल्दी गिरना है, खत्म होना है। तो इफेक्ट ऑन द करंट मंथ विल बी हायर, इफेक्ट ऑन द फार मंथ विल बी लोअर। So that remains the objective. Sir, why slowly? एक बार में आ गए तो क्या? The question is, sir, why do we want this to happen slowly? Yeah, let me explain this entire thing once again. What are we thinking about is the strategy name is calendar spreads. How do you create a calendar spreads? You have 2 expiry dates, buy one expiry date and sell another one. That creates a calendar spreads. A long calendar spreads means sell current month and buy next month. Sell current month and buy next month. That is called long calendar spreads. If you sell the same strikes, that is called normal calendars. If you sell different strikes, that is called diagonal calendar. We'll understand that differently. But what's the objective? My objective is I want the underlying to come to my strike price slowly. हो सकता नहीं ऑब्जेक्टिव, मार्केट गिरता है तो बहुत स्पीड में गिरता है, बढ़ता है तो धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो जब बढ़ता है धीरे धीरे करके बढ़ता है तो दैट विल मीट योर दिस क्राइटेरिया, दैट शुड मीट दिस क्राइटेरिया। Now
मेरा ये ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि मेरे को अंडरलाइन चाहिए, धीरे धीरे आएगा वहां पे। नाउ व्हाई डू आई वांट दिस कम स्लोली? द रीजन बीइंग, अगर एक बार में आ जाएगा तो इट कैन गो अवे फ्रॉम माय करंट स्ट्राइक प्राइस। अगर मान लो आज मैंने ये 10,600 का कॉल किया और कल 10,600 अगर आ जाता है तो क्या होगा? There is a possibility that it can move away from the strike price from 10,600. So it will change the payoff graph. How will it change? Let me explain that. So sell current month and buy far month is the trade. Now, Ankit, any questions in this so far? Okay. Let us do one thing. Let us take the prices of options in the current month and in the next month, and let me put that in front of you, and you judge how can this behave, how should this behave. You be the judge of it. uh, call options, and this will be April month. This is the May month. I got a question in this. Any strategy that works only in time value, on time value only? I'll answer that in a bit. So let me first put these numbers there, the prices of options there. ये तो current भाव copy है. Good one. मेरे को कॉल का प्राइस लेना है 10,300 से अप्रैल मंथ का. These are the prices. तो ठीक है, ये हो गया मंथ फॉर अप्रैल. These are call prices.
प्राइसेस 10,600 से। This is for the April month prices. Now let me take the May month of May from the call of 10,300 से 400, 500, 600, 700, 800, 900, 700, 800. These are the May month put prices. There are in the money also. Few of them are in the money also, and I have taken the out of the money also. So this is the prices for calendar spreads. Once we have the prices, it is easier. It will be easier for us to calculate the calendar spreads. Easy रहेगा calendar spreads calculate करने में. और prices से if you derive something by looking at the prices, the derivation, the प्राइस ऑब्जर्व करने से, जैसे शेड्यूल का प्राइस आपने ऑब्जर्व किया, वैसे कैलेंडर का प्राइस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, द अंडरस्टैंडिंग विल बी मच बेटर. ठीक है. सो लेट मी पुट द स्प्रेड्स इन फ्रंट ऑफ यू. निफ्टी चल रहा है कितना, 10,495 के आसपास चल रहा है निफ्टी. ठीक है. एंड this is your calendar spreads. This is your calendar spreads. Now some observations. आप एक बार इस प्राइसेस को एक बार ठीक से देख लीजिए. With strike price therein, this is your ATM. मतलब this is your सो ये स्ट्राइक प्राइसेस है और ये है ये है कैलेंडर स्प्रेड्स. लेट मी हाइड देम. अब आप देखो इसको. नाउ यू सी दैट. प्लीज ऑब्जर्व दैट फॉर अ मिनट and find out and remember that rule of sticky delta also. Where is the highest calendar spreads?
हाईएस्ट कैलेंडर स्प्रेड्स कहां पर है? This needs a participation by everyone. Yes, विजय जी, थैंक यू. कॉल साइड का अलग होगा, पुट साइड का अलग होगा, अलग कंपैरिजन होगा. बट कॉल साइड में कहाँ पे हाईएस्ट और पुट साइड में कहाँ पे हाईएस्ट? Sangeeta ji, you were paying attention to this because I showed this entirely in front of the अभी तो भाव कॉपी से प्राइसेस लिया और भाव कॉपी से प्राइस को माइनस कर दिया. अप्रैल और मई मंथ का प्राइसेस लिया और उसको माइनस किया, कुछ भी नहीं किया मैंने. और the maximum is this 10,500 and 10,500, both ATM. So can I write ATM calendars are highest? There is no doubt in this statement. ATM calendars are highest, no doubt in this statement. Now let me bring back that logic. Why do I want the calendar spreads? I want, what's the objective? Objective was I want the underlying to come to my strike price and stay there. Okay, makes sense. If your strike becomes ATM and it expires like that, so calendar price will be highest. That's what you want. तो 10,500 पे आपका अगर ATM पे हाईएस्ट है एंड लेट्स से यू एक्सपेक्ट कि 10,700 हो जाएगा या 10,800 हो जाएगा, सो यू क्रिएट अ कैलेंडर स्प्रेड्स एक्सपेक्टिंग कि ये 64 का रुपीस कुछ भी हो जाएगा, बट वो जब भी जाएगा ATM पे तो वो हाईएस्ट हो जाएगा. If 10,800 becomes ATM, that will become the highest calendar spreads. Clear? Now some rule of sticky delta applies similarly here also. पैसे कितने लगेंगे अगर आपने 64 वाला ये 10,800 वाला कॉल लिया, अगर 100 पॉइंट्स गिर गया मार्केट तो कितने पैसे लगेंगे और 100 पॉइंट्स बढ़ गया मार्केट तो कितने पैसे आएंगे? ये क्लियर है इसमें? इफ यू क्रिएट अ कैलेंडर स्प्रेड, you know very well कि ये मेरे कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे लग रहे हैं, how much I am going to lose and how much I am going to make. 89 90 है और अभी 64 है, ये 42 है नीचे, तो अगर 100 अगर बढ़ा तो 64 वाला 89 हो जाएगा, दैट इज ऑलमोस्ट 25 रुपीज. एंड 100 पॉइंट्स अगर यहाँ से फॉल हो जाता है तो 64 वाला 42 हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 22 रुपीज यू आर लूजिंग. तो 1:1 वाला सीन है ऑलरेडी. Should you be doing that or should you not be doing that is secondary thing, but how much you will make and how much you will lose is approximately you can see the prices and tell. Obviously there will be time effect. गिरेगा तो 189 होगा ना, पुट है, कॉल है 64 वाला कॉल, तो पुट है, नीचे वाला कॉल है. ठीक है. Now the prices
today might be following the rule of sticky delta, but not 1 week later. 1 week later, things will change because there will be effect of time value. Because there will be effect of time value also. How much will they change and how much will be the price affecting to it? And कौन से सिनेरियो में मेरे को कैलेंडर स्प्रेड्स लेना चाहिए, कब लेना चाहिए? There are little important things that we have to see further. But the rule of sticky delta you understand, and some time value application will be there when you look for a week ahead in terms of calendar spreads. ये एक week बाद क्या हो जाएगा calendar spreads में? You have to look ahead. But now currently what is your position? At least वो समझ में आते हैं. What is your position? You are selling current month and buying next month. Yes, selling current month and buying next month. आप ये काम कर रहे हो. So what are you expecting? What will be in your favor scenario? आपके favorable scenario क्या हो जाएगा? करंट मंथ में प्राइसेस गिर रही है और नेक्स्ट मंथ में प्राइसेस बढ़ रही है. फेवरेबल हो जाए ना? क्यों? आपने करंट मंथ का कॉल बेचा है और करंट मंथ नेक्स्ट मंथ का कॉल खरीदा है. आई एम टॉकिंग फ्रॉम द कॉल पॉइंट ऑफ व्यू. सो करंट मंथ में अगर प्राइसेस गिर जाए और नेक्स्ट मंथ में प्राइसेस बढ़ जाए तो मजा आ जाएगा ना. पर होता नहीं है ऐसा. जनरली नहीं होता ऐसा. Generally, you don't find these things unless there is a big dividend announcement, sudden dividend announcement. Generally, ऐसा नहीं होता है. But there are only direction is something. Only direction doesn't change option prices. There are few more things that change prices, like volatility. What if I say that current month में volatility गिर जाए और next month में volatility बढ़ जाए? Is this possible? And if this is possible, then it's a very good trade to take. Because if current month में volatility गिर जाती है और next month में volatility बढ़ती है तो I should be benefiting from this trade. Isn't it the case? So what are those scenarios? क्या scenario हो सकता है? बजट केम ऑन 1 Feb. जनवरी में वोलेटिलिटी नहीं रहनी चाहिए, फरवरी में फुल वोलेटिलिटी रहनी चाहिए. बजट इज ऑन 1 Feb. जनवरी में वोलेटिलिटी नहीं रहनी चाहिए, फरवरी में फुल वोलेटिलिटी रहनी चाहिए. इलेक्शंस इन 3 स्टेट्स. दिसंबर में वोलेटिलिटी रहनी, रिजल्ट का डेट अगर जैसे आ रहा है उसके हिसाब से वोलेटिलिटी रहनी चाहिए. एसबीआई रिजल्ट नेक्स्ट मंथ है, इस मंथ नहीं है. तो नेक्स्ट मंथ में वोलेटिलिटी रहनी चाहिए, इस मंथ में वोलेटिलिटी नहीं रहनी चाहिए. सो यू कैन थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ कैलेंडर स्प्रेड्स देयर if it is liquid. Let me just wait for it. Does direction affect these type of trades? Direction इसमें affect लेता है क्या? If you are doing calendar spreads, will the direction be affected? Directions का इसमें effect होगा क्या? The answer is yes. Obviously, you see that there is an effect of direction in the trade, so there will be effect of direction. But you can think of doing a calendar. You can your expectation उस पे depend करता है. So let me share one of my expectation on the current trade I have in one of the stocks, which is SBI.
SBI का रिजल्ट इज इनटू नेक्स्ट मंथ. SBI का रिजल्ट इज इनटू नेक्स्ट मंथ. करंट मंथ में कोई वोलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए. करंट मंथ में वोलेटिलिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए. इफ डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होना चाहिए. क्लियर? So what I will do is I will try to buy next month contract and sell current month contract. That will also, what will it help me in? First, obviously I am a little bullish on SBI because of result. क्योंकि result if result आता है तो result से पहले उस स्टॉक में कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी चालू हो जाती है on the basis of expectation of. It could be bullish activity or it could be bearish activity. I guess you guys have seen this in Infosys, in TCS, in you should be seeing, I guess, in HDFC Bank also. In the similar ways, उसी तरह से SBI में भी कुछ एक्टिविटी शुरू हो जानी चाहिए. ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, and that should be on the upper side rather than in the lower side. That's my expectation. आप उसमें bearish expectation भी लगा सकते हो. The calendar spread can be created at any point in time. So the best is calendar spread कब करने का, किस इंस्ट्रूमेंट में करने के लिए कैलेंडर स्प्रेड्स बेस्ट है? निफ्टी से बढ़िया कैलेंडर स्प्रेड्स के लिए कुछ नहीं, बिकॉज लिक्विडिटी का कोई पंगा ही नहीं है. फुल लिक्विडिटी आपको मिलेगी. करंटली लेट मी शो यू द SBI एग्जांपल. SBI currently is at 250. Yes, Wahid. Getting interesting questions there. And there was one more. And there's another one. Yes, I'm getting a lot of good questions here. Thanks, everyone. I'll go to each of them one by one. Just stay with the slowly. Let me build it. SBI result is into next month. Okay. I'll also talk about Bank Nifty calendars. This is April 1. This is May expiry, and this is the April expiry in SBI. Right now, the price of SBI is 250. You have a bullish expectation or a bearish expectation. आपका कुछ भी हो सकता है. So, if you are in the May month, you will want आप 260, 270, 280 कोई भी call option if you buy. So you have a lot of time, a lot of money invested in this. Let's say 280 का call है या 270 का 5.5 या 6 रुपए का call है, और ये है 4 रुपए का call 280 का. So if you buy this and you know you are bullish into the next month and you know कि current month पे कोई activity नहीं होने वाली है, ये एक activity in the sense current month is not going to be as volatile for SBI because there is no event planned for SBI. So you should be selling the current month contract. ये 280 का ये 70 पैसे में. It cuts your cost and this 70 पैसे should be वो 4 रुपए में से 4 रुपए 3.5 रुपए उसका कॉस्ट है, 3.5 से 4 के बीच का उसका बिड एंड आस्क है.
So let's say 3.7 is the cost, and you sell it at 70 paise. So the cost of your uh, 3 rupees. And why are you buying that call? Because that will not lose. I should not say lose, but that will get the volatility effect in the next month a lot. जिस समय इसमें volatility आएगी, जब उसमें volatility आनी चालू होगी, तब उसका effect उसमें बहुत अच्छा आएगा. So यहाँ पे you can cut the cost. In fact, when I did this transaction, I have this SBI वाला transaction of 280 call वाला. When SBI was 260, I started doing it, and so I have done this in 5 rupee and 1.5 rupees. That is 3.5 rupees. जब SBI का यही कॉल 5 रुपए में था, वो 1.5 रुपए में था, तो 3.5 rupees में किया हुआ है. And now right now and that is 50 पैसे मेरे को अभी लग रहे हैं उसमें. So but then I'm keeping it. The reason being only I'm expecting SBI में थोड़ा सा there should be a rise in the next month. It may or may not happen. It may happen. It may not happen at all. As SBI has moved a little away from strike price, I can also move towards the strike price. Like अभी मेरा 280 का है, तो I will change this to 270. अभी 280 से 270 में मूव कर सकता हूँ मैं. But that will be a costly thing for me. थोड़ा सा मेरा cost बढ़ेगा उसमें. But cost बढ़ेगा when that is called adjustment. Cost बढ़ेगा जब when the move will happen, then you will see कि कहाँ पे इसका impact आएगा. Let me repeat this thing once more. My objective remains कि मेरे को SBI next month में call लेने, and I have to the reason being SBI में call की जगह put भी कर सकते हो. Let's say SBI में put लेना है या call लेना है, or you take both side. Call put दोनों लिया because volatility बढ़ेगी. Volatility अगर बढ़नी है तो you buy the calls and buy the puts both and sell the current month का call and put both. Next month buy and sell the current month both, क्योंकि दोनों साइड बढ़ेगी. ये मेरा एक बायस है, इसलिए मेरा वो ट्रेड है. मेरा एक बायस है अबाउट द ट्रेड कि SBI should be bullish, but that is not I may not be always right. In fact, most of the time you are not always right. In the large trades you don't have to be wrong. In the small trades, if you are wrong, that is okay. In the large trades you don't have to be wrong. You have to be really right in those trades. So SBI में you buy the next month call, next month put, OTM calls and OTM puts, and sell the current month against them. So you get the benefit of these IVs, ये जो current month की IVs है, and you get the next month में जब IVs बढ़ेगी तो वो उसका वहाँ पे benefit आपको मिलेगा. It happens in the budget also. Like budget में almost straddle value जो रहते हैं, अभी तो currently you are seeing the IVs of 10 to 12. Budget में straddle value 1 month straddle value goes to around 350 or 400 rupees, which is a 350 to 400 option price. Let me show you my FNA charts. Okay. First Feb 2 साल. This fall I guess is observable. ये यहाँ पे जो fall है IVs का, I hope you guys can see this. ये जो particular fall है IVs का,
दैट्स बिफोर बजट एंड आफ्टर बजट. ये बजट के पहले जो आईवीज बढ़ी है एंड बजट के बाद जो आईवीज गिरी है. तो दैट इज द पार्ट ऑफ बजट. IVs rise before any event and they fall after the events. So you tend to, if you don't know the direction, if you're not favoring any direction, if you're favoring any direction, that's okay. If you're not favoring any direction, buy the next month contracts and sell the current month contracts. That's the trade. चाहे आप वो स्ट्रेडल से भी कर सकते हो, चाहे आप वो स्ट्रैंगल से भी कर सकते हो. The best is to do it स्ट्रैंगल से. And creating the calendar spreads in call and put both. How did we select the strike price of 280? Let me show you the strike price selection for 280. SBI was almost 260. 46. So here's my what happened with the SBI. मैंने जब 280 का सिलेक्शन किया था, then I'm going into deltas and ये जो डेल्टा है उसमें मैं एक बार जा रहा हूँ. मेरा सिलेक्शन था SBI में 260 के टाइम पे मैंने SBI किया था एंड 15 दिन बाकी थे उस समय एक्सपायरी में. 11 तारीख को मेरा ये ट्रेड 11 से थोड़ा दिन पहले का ही लिया हुआ है. तो ये डेल्टा उस समय 0.18-0.19 का था. So I always try to select a 20 delta strike price, 20 to 30 delta strike price. तो current month. So वो strike price selection करने में एक advantage ये रहता है कि if the underlying moves towards you, then the benefit is too good. When this strike price starts become 15 to 20 delta का 20 to 30 के बीच में डेल्टा का लेते हो, then strike price starts coming towards you, that is it starts becoming ATM, then the benefit is too good. I know the questions are coming in. Let me first finish the thing and then let me take the question. In a calendar, is it mandatory that the current month should be less volatile and next month it should be far more volatile due to some reason, or you just took a random example for explaining us? In a long calendar spread, you want the underlying in the current month to be less volatile. If you want the current month to be more volatile, then you choose a short calendar spread. This is इसका उल्टा करोगे तब आप, अगर आपको लगता है करंट मंथ में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होने वाली है, तो you choose the reverse of it. Or otherwise, once I said कि ATM calendars are highest and you know the ATM आज जो ATM है वो कल ATM नहीं रहेगा. ये जो आज ATM वो कल ATM नहीं रहेगा, तो you start doing the reverse. You buy the current month and sell the next month. And you know कहीं भी जाएगा तो ये आपके पैसे आएगा, चाहे 100 पॉइंट भी मूव करे 2 रुपए से 3 रुपए आएंगे, और ज्यादा मूव कर गया तो बहुत रुपए आएंगे. So that is how it is. My example of SBI or budget was on the long calendar spread. If you choose to do a short calendar spread, you can do so, but you need to have a really good event falling in the current month.
And if you cannot, in the short calendar spread, you have to time things correctly and exit also correctly, because short calendar may you can still think of staying in the trade. Long calendars में, like in the case of SBI, I am staying in the trade क्योंकि SBI में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, I am still staying in the trade. But in the short calendar spread, I had to get out of the trade because अब SBI अगर move करेगा यहाँ से, let's say 250 आ गया SBI, I am losing 50 पैसे. Now SBI starts moving towards my strike price, then the calendar spreads will widen, and I will lose money there. So the idea for the short versus long calendar spread is, in short calendar spreads, you want quick movement. And in long calendar spreads, you want movement to happen slowly. So you said that we should calendar spread mostly to Nifty, but Nifty currently might be affected a lot by macroeconomic factors also. So how do we counter that? Like, there are things which you know of, and there are certain uncertain events which might happen. Just the volatility might entirely change. So how will we counter that? I mean, the question is, how will you counter the macroeconomic scenario if they brings in volatility, or they get the volatility away? The answer is no, I can't change. I cannot change the macroeconomic scenario. If Mr. Trump is firing missiles, I don't know when he orders firing missile, and I'm not sure क्या हो सकता है. So that is not in my control, and I cannot do that. I cannot prepare for that. The answer to that question is, I cannot prepare for that. What I can prepare is, I can prepare for budget, I can prepare for the results, and in this way I can try to think in terms of what are the possibilities that I have in my hands. Let me also bring about a specific thing about delta in this case, because deltas will be important in this. Delta of 0.20 versus delta of 0.3035. What does they generally, मोटा मोटी अगर आपसे मैं पूछूं तो इसका क्या मतलब हुआ? First is these are called delta, and the strike price, if this is अगर ये 10,200 है तो ये 10,300 या 400 होगा, मतलब इसके नीचे का होगा. The point in this is 0.35 delta or 0.2 delta says there is a 20% probability that this strike will go in the money. The same will happens with the 0.35 delta, that there is a 35% chance that this strike price will go in the money. The probability of the strike price going in the money is your delta. The probability of strike price going in the money is your delta. The higher the probability, the higher your cost will be. The higher the probability, the higher the cost will be. So I chose 280 based on, I could have chosen 260, 270 or 260 पे था, then I chose 280 because उस समय उसकी डेल्टा, उस समय उसका डेल्टा इसका 0.2 के आसपास था, और तो I chose this 20 probability, ये 20% चांस है कि ये in the money होगा, तो there is 80% चांस ये in the money नहीं होगा. So that makes me safer, that makes it a safer bet for me कि ये इस month में in the money नहीं होगा. And if it doesn't happen in the money in this month, then this expire worthless, and my next month will give me a long call option free of very less cost, at a very less cost. That was my objective. I should be switching it to 270 strike price now, but I'm not doing that. It will involve if somebody is initiating
transaction today, he can choose 270 or 280 also, based on the probability, the delta scenario also. I got a question from Vaid, which is, how about Bank Nifty spread in calendar weekly options? Bank Nifty में weekly options है, उसमें भी calendar spreads कर सकते हैं, तो दो weeks है. Let me talk about weekly options. Week 1, 2, 3, week 4, and monthly expiry. Week 1, 2, 3, 4, and monthly expiry. This is how a month is there in the Bank Nifty. Monthly expiry is mostly liquid in the names of 25,000, 500 in the 500 strike price difference. 26,000, 26,500, 27,000. Monthly expiry in these ranges are always liquid. यहाँ पे हमेशा काम रहता है. Rest of the strike price are not very good in liquidity. So entry exit वहाँ पे tough हो जाती है. In a week 1 scenario, week 1 में जब आप खड़े हैं, लास्ट मंथ में, जैसे अभी मंथली एक्सपायरी में अच्छी लिक्विडिटी आ गई in all the strike prices. When you are in week 1, week 3 में आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी. Week 1 starts from Friday, and on Friday if I'm talking about liquidity, this calendar spread, that week 3 versus week 4 is will always give you best liquidity. Week 3 versus week 4 will always give you the best liquidity. जो monthly expiry versus जो last week होता है, उसमें आपको सबसे अच्छी liquidity मिलती है. The thing is, week 2 में liquidity कब आती है? ये फ्राइडे को स्टार्ट होके थर्सडे को खत्म हो जाता है. ये फ्राइडे स्टार्ट हुआ, थर्सडे को खत्म होगा. वीक 2 में लिक्विडिटी आनी शुरू होती है वेडनेसडे से. सो ये वेडनेसडे को शुरू हुआ है और ये थर्सडे को खत्म होने वाला है. तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक दिन बाकी है आपका कैलेंडर किया हुआ. दैट बिकम्स as good as a directional trade. That calendar trade becomes as good as directional, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू तो कुछ बाकी है ही नहीं अब. सो इसीलिए वो कैलेंडर ट्रेड्स इन दी फर्स्ट 3 वीक्स इज लिक्विडिटी. पहले 2 वीक्स में अगर कैलेंडर करने का कोई सोचते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लिक्विडिटी. बट थर्ड एंड फोर्थ में आप कैलेंडर स्प्रेड्स आप इजीली कर सकते हो, वहां पे आपको लिक्विडिटी मिल जाती है. ठीक है.
There will be a document which will be shared to you with respect to strategies कि आपको कौन सी strategy and the PPTs also that will be shared to you after the class is over in the next week, not today itself, in the next week that will be shared. Sangeeta ji has a question for PPTs के लिए. Let me start. Let me put these questions एक बार side में. And now we have this calendar spreads here. And we arrived at this logic: ATM calendars are highest. Market looks volatile to me. मेरे को आज markets volatile लग रहा है. At the money calendar spread, sell. Without thinking about direction, at the money calendars, sell. Remember, at the money calendars sell कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है you buy the current month and you sell the next month. You buy the current month and you sell the next month. You don't have to think about direction. Just the market has to crack or go up high. ठीक है? दोनों में से एक चीज होना चाहिए. Either market has to crack or market has to go up really good. So if that is if that happens, then your calendar spreads will give you money there. The thing is, it doesn't always happen. Market 50 point move kiya and it came back. The best would be you को जितना जल्दी आप एक्सिट करते हो उतना बेटर है. या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मार्केट I'll keep the position for a week and I'll bear the losses of the time value that is it loses. Current month में time value lose होगा, but the market will shift the strike price 200 or 300 points away. So if market will shift 200 or 300 points away, whichever the direction is, then it should give you money. Got my point? So if that is your view, then putting a calendar spreads, short calendar spreads also work. Okay? Long calendar spreads, if you are doing in one of the directions, if you're doing it in both call and put, then it should make you money with the rise in volatility. बोथ साइड का मतलब क्या हुआ? आपने कॉल की साइड भी किया, पुट की साइड भी किया, then the volatility effect will make you money. So why volatility effect will make you money? There could be a reason in your mind why the volatility effect should make you money. In fact, currently we have 11 days to expiry. Let me put the volatility at 12%. What I've done so right now is 10,500 का अंडरलाइन है, 10,500 की एक्सरसाइज प्राइस है, 11 दिन एक्सपायरी है और 12% वोलेटिलिटी है. So you have call option at 87 and 87. Clear? What is the Vega amount here? 7.272. If you change the days to expiry to 11 from 11 to 30. Sorry, 31, 41, because 30 days extra उसमें मिलेंगे आपको. If you change from 11 to 41, what is the change in the Vega?
for the same calendar spread. The 7 becomes 14. तो 1% वोलेटिलिटी का चेंज उसमें बहुत ज्यादा आएगा जो फार मंथ एक्सपायरी है. फार मंथ एक्सपायरी में वोलेटिलिटी का चेंज विल बी बिगर देन द करंट मंथ बिकॉज द वेगा इफेक्ट in the far month is double of the current month. Add this with your direction. Add this to your direction. Now if you add direction into it, that is, let's say you are bullish on the next month in the call side or bearish in the मेरे को लगता है next month में the market will be should not be crossing 10,600 and will come back to lower levels. That's my view. You have a different view. ये view के साथ अगर आप trade करते हैं so there is a good possibility of doing calendar spreads and make like if you then you should start thinking in terms of these possibilities कि क्या which calendar spreads it's suitable to you. अभी तो आपने ये normal calendar spreads देख रहे हैं. One is also a diagonal calendar spread. What is diagonal spreads? Diagonal spreads में मैंने what I have done this in this is same strike price. Diagonal is different strike price. So you buy this one and you sell a different one, which is let's say 9,800. Same here. Buy this one and you sell this the one strike above. You can do it for 2 strikes above also. You can do it for 3 strikes above also. The rule of sticky delta still applies to these things. This is why you are doing this. You are trying to cut down on your invest the amount you invested. You are trying to cut down on the amount you invested. आप एक स्ट्राइक ऊपर अगर बेच रहे हो इसका मतलब आप अपना पैसा कम लगाना चाह रहे हो उसमें. That is why you are doing this. Sir, इसका objective is to in the confidence level differentiate between the both these. उसमें था कि underline to come to your strike slowly. The similar objective इसमें slow motion ज़्यादा बढ़ जाता है. Strike अलग है. हाँ तो you need the underlying to come to your strike price, sold strike price. You need the underlying to come to your sold strike price a little more slower than the previous ones. डायगोनल में जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि मेरे अंडरलाइन के पास में आएगा तो उससे थोड़ा और स्लोली आना चाहिए.
Let me write down the objective here first again. Long and short calendars. ATM is highest. So if you are expecting selling ATM is the best choice. Selling ATM is the best choice. अगर आप मेरे so if you are going for short calendars, do it only at the ATM. ये नहीं कि आप OTM में जाके short calendar कर रहे हैं. Don't try that. Long calendar अगर आपको करना है, mix it with a bit of direction. ऑब्जेक्टिव आपका वही रहता है, यू वांट द अंडरलाइन टू कम टू योर नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस. थोड़ा सा डायरेक्शन आपको इसमें मिलाना पड़ता है. एंड इफ इट कम्स स्लोली सॉफ्टली एंड इट बिकम्स ATM around the expiry, by the time there is expiry, then it makes good money for you. Try to see always the event dates. Very important in this case, in terms of at least volatility के लिए you need to know the dates of the events. Some of the fantastic things that can happen is on the expiry day there is budget, which normally is not going to be the case, or on the expiry day there is an election date, election outcome. Those can be wonderful days for volatility loving people. If somebody is looking in terms of delta ki, which delta should I go for long calendars, because delta which strike price should I choose? When I said I want the underlying to become the ATM, my strike to become ATM slowly, so that means I want the ATM, I want the strike price to become 0.5 delta. I want the strike price to become 0.5 delta. So currently, that if I am doing it OTM, so currently I should be doing it at either 0.2 to 0.3 or 3.5, between these delta. 0.2 delta में अगर आप कर रहे हो, इसका मतलब आप you are expecting थोड़ा ज़्यादा बड़ा move, and 0.35 delta में अगर आप कर रहे हो, तो इसका मतलब you are expecting small move and you make money and you get out. So you are expecting your 0.2 or 0.35 delta to become a 0.5 delta. ये जो कहने का मतलब है कि I want the underlying to become the come at my strike price. That is the other way of saying कि मेरा delta becomes 0.5 or my strike becomes the ATM. So you will choose a OTM, आप 0.3 delta ले लो, 0.2 or 0.35 के भी 0.3 delta लो, and then you select the strike price selection becomes easier for every single, मतलब एक वो हो गया, एक norm you decide कि I will be choosing a 0.3 delta of strike price going forward in the calendar spreads. So that is all, I guess, from my side on calendar spreads. You have any questions, you can shoot.
और क्या क्वेश्चन है? What's the impact of event date is far from expiry? Yes. What is the impact when the event date is far from expiry, like budget, and near the expiry, like SPA result on previous day of expiry? Budget is on 1st of April and SPA result is in the middle of the month. Next month, middle of next month. That budget is on the 1st day of the next month. An event which is on the 1st day of the next month, then it is for sure the volatility of the next month will not go at all down. So you should be a net buyer in the volatility in that month. One. And about selling the volatility in the current month, करंट मंथ में भी एक्सपायरी के बाद ही वोलेटिलिटी, एक्सपायरी में वोलेटिलिटी इतनी बड़ी नहीं आती है. Volatility rise as such will not happen. The directional movement can happen. Like in the case of budget Nifty movement, if you see Nifty will move, Nifty in itself, the direction factor will come in Nifty before the budget. कोई भी इवेंट होता है उसके एक्सपेक्टेशन में एक रैली या एक फॉल जरूर होता है. This has been the precedence in last couple of days कि एक budget rally, we hear it is in the news, so that will happen. That is a possibility. You have to take that into your trading positions. You have to take that in account. And since this is on the last day, the expiry is not falling there. Expiry के भीतर में नहीं हो रहा, तो next month में, current month में, you don't have to be really actively managing your positions. How did we select the strike price? I selected it on the basis of 0.2 delta, and that was my basis for selecting the strike price. I wanted the move. I'm expecting a really good move when the PSU bank entire sector is coming for result. That's my expectation, and should not be influenced on your part. I guess I answered this question. In calendar SPA, is it mandatory to sell current month and should be less volatile? No, it's not necessary. And when you do a short calendar, you need to be really quick. We have 5 minutes break and we'll come back after this. We have time is 1:07. एक 15 पे अपने वापस मिलते हैं, ठीक है? 1:15 पे.
Thanks for the compliment, Ankit. But let me tell you something about it. Let me be very. Let me tell you something about options and why this calculations. What do you see in this page? What do you see exactly in this page, Ankit? Or anyone, to anyone? That, I guess, answers a lot of things. And this is noise. You don't understand things in this page and this number, that becomes noise. You understand things in this page with numbers, that becomes your trade. These OI, these volume, these are something people are trading. Calculations, numbers, everyone is doing that. So am I, and so will be you. So you cannot shy away from this, at least. And it requires practice that you will be doing. You have a good future, and you have a lot of time in front of you. So practice. मेरा भी कोई maths, my favorite subject was maths, but I'm not saying that I was really good at maths. Work with this calculator. Let me tell you, आपको जो काम सीखने के लिए आपने 1 महीना दिया है अभी, I personally learned it by observing prices. I spent almost 6 months writing the prices, observing the prices, almost all single prices for the day. Maybe I was a bad learner. Maybe I was a good learner. I don't know. I cannot judge myself. But observation will be important, no doubt about it. When there are so many numbers, observation has to be important. Otherwise, the numbers will come. Let me tell you the beauty of these numbers. This is Nifty. So many strikes, so many prices. Every expiry they will come back. The similar thing will be there. You just have to find a single pattern. Once you find that pattern, the entire once you have this pattern in front of you,
then you have the ability to score really well in this game. निफ्टी वही रहेगा, बैंक निफ्टी वही रहेगी, हर महीने एक्सपायरी आएगी, हर महीने ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन बेचना है, ऑप्शन लेना है, ऑप्शन हर महीने ही होगा ये काम. They will not go away. You don't have to do research into the company. You don't have to do the analysis of going deeper into the banking sector. कुछ हो गया, numbers तो ये रहेंगे ना, तो इन numbers को analyze करना है. What is going behind in these numbers? So that should be the approach कि numbers हैं and I have to analyze. Once you crack these numbers, कहाँ पे कितनी possibilities है, not the arbitrage ones, then it's a good going for you. I'm really comfortable with options more than futures, personally, if you ask me. In fact, what type of numbers and calculations are there? एक स्प्रेड में कितना पैसा बनेगा, कितना पैसा लगेगा, कहाँ पे पैसा बनेगा, कहाँ पे पैसा लगेगा. That's the number we are talking. That's easy, yaar. That's pretty easy. It will take not more than 2 days to practice it. Once you practice it, it's yours. Go to edenoptions.com, take the challenge and do it. Pretty easy. I mean, that's the purpose. Take this challenge. लॉन्ग कॉल ऑप्शन किया, 99 पे 1900 का कॉल, कितने पैसे लगेंगे? -99 -99 1999, ये 28 नहीं 30 रुपए. So you made 228 rupees. 13,500 का कॉल शॉर्ट किया 238 रुपए में, 238 कॉल शॉर्ट किया 6450 में, पुट शॉर्ट किया 6550 में. प्राइसेस हो गई ये. अब आएगा मजा. तो 454 प्लस 188, दिस इज यू रिसीव्ड. पुट है -6550 का, तो -6550 प्लस 5912, 4 रुपीज. 454 plus 188 minus 6550 plus 5862. 454 plus 188 minus 650, नहीं ये तो पूरा एक्सपायर हो जाएगा. कॉल 6450 का शॉर्ट किया ना, माइनस 64 प्लस 6450 शॉर्ट नहीं माइनस प्लस. अच्छा शॉर्ट है मेरा, प्लस माइनस 100 रुपये लगेंगे ना. हाँ, सो ये स्पीड रहनी चाहिए यार कैलकुलेशन में. 12-13 रुपए इसमें आएंगे मेरे पास. 320 का पुट शॉर्ट है, 301 रुपए हो गए. तो 320 का पुट शॉर्ट है, 301 रुपए हो गए, तो 19 रुपए मेरे लगेंगे, -19. ये 13 रुपए आए मेरे पास और 320 का पुट में 60 रुपए लगेंगे. 13 रुपए आए मेरे पास, 360 के कॉल में 5 रुपए लगेंगे. कॉल पुट लॉन्ग है 140 का. ये स्ट्रेडल लेके ये स्ट्रैंगल बेचा हुआ है. तो जो आपने कल आयरन कॉन्डो कर रहे थे उसका उल्टा ही है. दिस इज कॉल्ड आयरन
काउंटर रिवर्स. सो एन बटरफ्लाई यू कैन ऑल्सो से. 18/3/21 में मेरा लिया हुआ है, 6/1/7 में मेरा बेचा हुआ है, तो मेरा नेट रिसीव 14, माई नेट रिसीवेबल इज 14. अब 80 रुपीज हो गया प्राइस. 80 रुपीज में कौन सा इन द मनी रहेगा? तो ये पुट लॉन्ग पुट शॉर्ट यही इन द मनी रहेगा. तो इसका वैल्यू 20 रुपीज हो जाएगा, इसका वैल्यू 20 रुपीज हो जाएगा. सो मेरा 14 रुपये लगा हुआ है. 14 आई हैव इन्वेस्टेड प्लस 20 माइनस 14 प्लस 167 में 20 माइनस 14 प्लस 20, तीनों में 6 रुपये. Ankit, I hope you get the answer for your question. Fast calculation, you need practice. This is a place to practice. Those were the random questions that were coming in. 2 दिन करो यार, 2 से 3 दिन आप करोगे, डेडिकेटेडली बस करना होगा. 2 से 3 दिन डेडिकेटेडली करोगे, that will be clear. In fact, that should be the approach कि पहले आप उस कैलकुलेशन को पक्का करो. ये पर्पस वही था उस वेबसाइट को बनाने के, वो कैलकुलेशन अगर आपकी पक्की हो गई कि इतना फास्ट वो कैलकुलेशन हो गया, देन दी स्ट्रैटेजी कितनी बड़ी बात है. स्ट्रैटेजी के कितने यू नीड, स्ट्रैटेजी आपकी भरी पड़ी है, जहाँ पे आप स्ट्रैटेजी वो मिल जाएगी. स्ट्रैटेजी का वो रीजन मालूम होना चाहिए कि मेरे को बटरफ्लाई से क्या चाहिए, मेरे को स्ट्रेडल सेल से क्या चाहिए. So let me take some time to give you some about standard deviation. Really good material is available. In fact, if you guys have not visited tastytrade.com, yeah, one of the best place to visit this to learn options, this and option alpha. tastytrade.com and option alpha. वहां पे जाओगे, सारी की सारी थ्योरी जो हम पढ़ाते हैं सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा वहां पे. अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं ये आपको यहाँ पे सीखना है. यही मेरे ख्याल से आई ट्राइड टू टीच. आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल आई वाज. स्टैंडर्ड डेविएशन, let me set my name. One standard deviation means 68.2% outcome of the distribution. मतलब आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि ये मूव इतने परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा. मोटा मोटी अगर मैं stock has an implied volatility of 20%, that means stock 100 का है तो 80 से 120 के बीच में रहेगा with a 1 standard deviation, 60 से 140 के बीच में रहेगा with 2 standard deviation, and 40 to 160 के बीच में रहेगा for 3 standard deviation. This example is taken from the tastytrade.com, so you can get this on the tastytrade also, but this is taken from there only. एग्जाम्पल वहीं से लिया हुआ है. लेट अस अंडरस्टैंड कि वो कैसे होता है. ठीक है, one standard deviation, what does it say? There is a 68.2% probability कि ये मूव इसके बीच में रहेगा. That is एक बेल कर्व है, इन दोनों के बीच में ही रहेगा. 68.2%. तो बचा कितना? माइनस 100, 31.8%. मतलब 32% जो है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये मूव कभी नहीं, ये मूव नहीं आना चाहिए. 1 SD का क्या मतलब हुआ?
कि ये 32 जो जहां पे ये फिगर है ये वहां पे नहीं पहुंचना चाहिए। सो जब अपने snap.capital माइंड देख रहे थे and this SD table that we were looking at, that one SD move is का lower range is 10246 and 10714 with this time frame. That is, by this time Nifty should not be coming around these prices. मतलब these are the prices वहां पे Nifty आके one standard deviation के 68% चांस है निफ्टी इस स्टैंडर्ड डेविएशन इस प्राइसेस के बीच में रहेगा। There is a 68% probability that Nifty will come range between these prices. So what you will do is इन दोनों स्ट्राइक प्राइस का कॉल एंड पुट बेच देने का, 10,200 का पुट बेचो और 10,700 का कॉल बेचो, यही होता है। रिमेंबर देयर आर फ्लॉज इन दिस, ऐसा नहीं कि ये एकदम ही फुल प्रूफ है, बट देन ये फुल प्रूफ नहीं है, बट इट हेल्प्स यू टू चूज स्ट्राइक प्राइसेस। व्हाट डज इट हेल्प यू? इट हेल्प्स यू टू चूज स्ट्राइक प्राइसेस। कौन सा स्ट्राइक प्राइस मैं चूज करूं? यू विल सी राइट नाउ 10,700 10,250 का पुट एंड 10,700 इनका डेल्टा चेक करते हैं, इन दोनों का अपने डेल्टा चेक करते हैं। ये इन दोनों का डेल्टा करंटली क्या चल रहा है, 10,250 एंड 10,700 के आसपास का डेल्टा चेक करते हैं। निफ्टी ऑप्शन प्राइस को खोल लेते हैं, 10,495 चल रहा है। ये प्राइसेस है फ्राइडे का, तो फ्राइडे कितना तारीख था? 13 तारीख, 13 और 13 26:00 वोलेटिलिटी का 12 रखते हैं, तो 500 का कॉल का प्राइस आ जाएगा 92। व्हाट इज द प्राइस रनिंग एंड 84 रुपीज चल रहा है, तो आई हैव टू चेंज द वोलेटिलिटी टू 11। सो दिस इज द वोलेटिलिटी करेंटली 11 वोलेटिलिटी चल रहा है, तो 84 रुपीज इज द प्राइस जो कि इज मैचिंग थ्रू this price. So 11% is the volatility in Nifty. मेरे को 10,250 का पुट देखना है, which is 31। तो नहीं चल सकता यार, सॉरी ये एक मिनट, 10,500 चल रहे ना, हाँ तब ठीक है। मई में नहीं है, यहाँ पे मई में ज्यादा होगा। 10,250 13 डेज और ये 15 करो। पुट ऑप्शन प्राइसेस ऑलमोस्ट 33, इसको 14 करते हैं, 14.5। So the delta is 0.195, almost 0.19 let me assume, और 10,700 का कॉल। एक मिनट, 10,250 with the volatility of 11% में 12 आ जाएगा, 10,700 का कॉल। प्राइसेस क्या चल रही है अभी? 10,700 का कॉल इज 16 रुपीज, सो 16 रुपीज इसकी वोलेटिलिटी और कम होगी, बट लेट मी टेक द 11। द प्राइसेस आर ऑलमोस्ट 16 रुपए के आसपास एंड द डेल्टा इज 0.15 and 0.195, यही था। You add them together, how much is the move? 0.345, matching almost
almost close to that 32%. So अगर आप ये दोनों strike price के call put if you sell, so you get the you have the movement which in the range of Nifty will be into one standard deviation. कि एक standard deviation 60%, 68% चांस है कि वो मूव 10,250 से 700 के बीच में होगा अगर 26 अप्रैल की एक्सपायरी है तो. As you move, let's say कि अभी ये 10% का अपने volatility कर रहे थे. If you change the volatility, if you raise the volatility अगर ये बढ़ जाता है तो ये स्ट्राइक का डिफरेंस, स्ट्राइक प्राइस बढ़ जाएगी. ये स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर बढ़ गया तो आपका वो जो प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है वो बढ़ जाएगा. ठीक है. तो दैट 32% जो आएगा, ये जो 32% अपने डिस्कशन कर रहे हैं, ये 32% आएगा. द स्ट्राइक प्राइस विल बी वाइडर. अभी जो 10,250 और 10,700 है, दैट स्ट्राइक प्राइस विल बी वाइडर. इट हेल्प्स यू चूज इनटू दीस स्ट्राइक प्राइसेस. हाउ विल यू, इसको दूसरी तरीके से मैं अगर सोचूं, अगर मैं वोलेटिलिटी नहीं बढ़ाऊं, सिर्फ नंबर ऑफ डेज भी बढ़ाऊं, तो भी मेरा स्ट्राइक प्राइस वाइड हो जाना चाहिए. द प्रोबेबिलिटी मूव शुड बी वाइडर फॉर द लार्जर नंबर ऑफ डेज. इफ आई हैव लार्जर नंबर ऑफ डेज तो मेरे को वही 68.8% प्रोबेबिलिटी के लिए मेरे को मूव लार्ज मिलेगा, स्ट्राइक प्राइस मेरी वाइड हो जाएगी. सो व्हेन यू सी एसडी टेबल, इफ ये 3105 का है तो यहाँ पे सेम 1 एसडी मूव विल बी, द स्ट्राइक प्राइसेस आर 900 पॉइंट्स. 900 पॉइंट्स. सो अगर आप नेक्स्ट मंथ का, इफ यू सेल इट फॉर द नेक्स्ट मंथ, आप नेक्स्ट मंथ के 10,000 और 11,000 का कॉल बेचते हो, 11,000 का कॉल और 10,000 का पुट, इफ यू सेल दैट, that is going to explain you, that is the explanation for 1 HD move for 3105. एक मई तक आपको वो पोजीशन रखनी चाहिए. एंड these numbers keep on changing every day. आज ये 10,000 और 10,930 है. अगर वो मिसाइल अटैक है और मार्केट कल गिर गया 10,500 से 10,300 है, that HD move will change. This figure should change a bit. पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं होता है. दे हेल्प यू चूज इन स्ट्राइक प्राइसेस, नो डाउट अबाउट इट कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा मेरे को चूज करना चाहिए. दे हेल्प यू इन दैट. हाउएवर, डोंट गो ब्लैंक इनटू these things, this thing also. Why you should not be going blindly believing on these numbers? By one standard deviation or two standard deviation, there are called black swan events. I guess सबको वो अक्टूबर का एसबीआई का मूव याद है, और नहीं याद है तो कल अपने वो डिस्कस किए थे. पीएनबी 130 से 200 बढ़ा था. If you blindly believe on these numbers, SD moves में, that they will be not capturing the moves that happened in the SBI or PNB, but those are one-time events. So अगर आपको इस नंबर्स पे बिलीव ही करना है तो कीप योर पोजीशन हेज्ड. दैट्स व्हाट द ट्रेड ऑब्जेक्टिव शुड बी. ब्लैंकली मेरे को एक दो स्ट्राइक प्राइसेस मिल गई, उन दोनों को मैं बेच दूं, दैट शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव. वो बेचा तो फिर मेरे को उसको कुछ एक हेज पोजीशन रखनी है. हेज पोजीशन इन द सेंस आई विल डू आयरन कॉन्डोर, आई डू स्ट्रैंगल, पर दूर का स्ट्रैंगल भी मैं लूंगा. तो आयरन कॉन्डोर सीम्स टू बी द वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर दिस.
we are coming to closer and closer to the expiry of this session. In a couple of hours, our session will come to an end, and there's a difference between an online student and offline student. At least you can see the face of the offline student, whether he's smiling or he's getting bored. But with the online student, you cannot do that, and just pray that they are smiling. It's when there are a lot of numbers, and only numbers and numbers, where you cannot, there is very little choice of interpretation, and you are only doing numbers, then it becomes a very boring task to a lot of people, which is actually right. If I see an Excel sheet with only numbers, तो मजा नहीं आता. And that too online, तो और भी ज़्यादा वो लगता है यार, what am I looking at, what am I seeing at. However, you do that in practice, in terms of you apply, you start unless you observe, you will not understand. Yes, I agree big time on this, and that's what I mentioned, ki you have to observe things. You will not become a pro overnight. I'm also not a pro, I would say. There is little, I also have aspiration to manage a really large funds. Like there is a hedge fund who's managing $10 billion. Let me aspire for that. That's what I'm looking for. So what I'm saying is, start step by step. What is the thing that you have taken from the class? I don't know if I've given you something substantial, but at least few things that I guess should be confident about now. Option OI कहाँ पे मिलती है, क्या देखना है, उसका थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा. ठीक है. अभी जो करंट OI है उसमें टाटा मोटर्स हाईएस्ट है. पिछले महीने टाटा मोटर्स नहीं था ना. When we started the class, Tata Motors wasn't at there. I hope everybody remembers this very well. That is, Tata Motors ka OI is highest in 380 and 400. Clear? Nowhere near 380 and 400. The next is ICICI Bank, puts and calls both. ICICI Bank में puts में भी OI high है और 300 के calls में भी OI high है. And no news. मतलब न्यूज भी बहुत सारी है. सॉरी, नो न्यूज नहीं, न्यूज भी बहुत सारी है. दिस इज ICICI बैंक फॉर यू. सो फार nowhere there. So what to sell, कौन सा ऑप्शन, you have heard कि the option expire worthless. So options expire worthless. So what to sell, कौन सा ऑप्शन सेल करें, उसके लिए I guess you got one data point. The first takeaway from the OI session. ठीक है. उसके बाद outliers you will be finding, keep on going. इस महीने मेरे को कोई outlier significant नहीं मिला था, other than मिला था but I did not notice it. The outlier was C8 Limited. C8 Limited के 1600 के कॉल्स में एक्सपायरी से पहले ही बिल्डअप हो गया था. So let me leave that. I could not interpret it very well. But if you check, आप उसको चेक कर सकते हो. एक्सपायरी डे का अपने जो लास्ट मंथ का एक्सपायरी था उसमें C8 लिमिटेड को आप चेक करो, उसका ओपन इंटरेस्ट
इन टर्म्स लास्ट मंथ का और करंट नेक्स्ट मंथ का, दैट इज करंट मतलब मार्च और अप्रैल का, उसको कंपेयर करो, which has the highest open interest. See that. So you will find something of an outlier there. May happen in this month, may not happen in this month. First takeaway from the open interest session. Second was volatility. Volatility in the earning season, how this goes up and how they come down. You saw this with Infosys. अभी तक कमिंग डाउन आपने देखा नहीं है, जो आप कल देख लोगे किस हिसाब से वो वोलेटिलिटी कम डाउन होगी एंड इफेक्ट क्या होता है. You have the snapshot for yesterday, you will see, take the prices for tomorrow. Volatility, at least you saw the rise of volatility from 1st of April to the 10th of April. You saw the rise of volatility where the straddle value were not changing, but the volatility was slowly rising. If you want to see in the graphs, what you will see is this is what happened in front of you. यहाँ से 28% से volatility for the NFI started rising, 31, 32, 34, 38, 39, 40. ठीक है, ये आपके सामने हुआ है. नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे पास यही रहेगा. सो इट हैपेंस, इट हैज हैपेंड इन फ्रंट ऑफ यू. कल आप देखोगे ये 39 का 25 हो जाएगा या 26 हो जाएगा, वट एवर दी थिंग इज. अगर 7% से ज्यादा इन्फोसिस मूव किया, जैसे 10 या 12%, तो वोलेटिलिटी 30 पे अटक जाए, पर 30 पे होगा तो अगले दिन 25 जाएगा. तो दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन ऑफ. मैं 25 के बाद क्या करूंगा, कल 25 हो जाएगी, 25% लेट्स से वोलेटिलिटी हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा इन्फोसिस में, आई विल सी वेयर द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज एंड आई विल ट्राई टू सेल इन्फोसिस देयर इन दोज स्ट्राइक प्राइसेस. Got it? This was the second takeaway about volatility. बढ़ी कैसे और गिरेगी कैसे, इवेंट्स में इसी तरीके से होता है. ठीक है, strategies was the third, जिसको थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट अभी करूंगा. बुलिश, बेयरिश, वॉलेटाइल, and flat. What happens is, while we are discussing all these strategies, we get a lot of questions in between and we try to see the answers of those questions. So you may get haphazard answers for that, but when I combine, right, let me combine them all things at one place, that may help you understand objectively that I have to do this, I have to do this, I have to do this. Okay, before coming to strategies part, what we did was rule of sticky delta. How to see the prices, कि मेरा price, what will the prices become? That is one of the biggest question we have, कि 100 रुपए घट जाए निफ्टी या 100 रुपए बढ़ जाए निफ्टी, तो मेरी prices क्या हो जाएगी? Be it for the single option prices, be it for the strategies, be it for the XYZ things, XYZ strategies. So the best alternate, the best finding is find the upper one and find the lower one and adjust for the time values or adjust for the volatility there. ये दो चीज का एडजस्टमेंट आपको करना होगा, बट जेनेरिक रूल यही है कि आप यू लुक फॉर दी स्टिकी डेल्टा रूल. आज अगर 100 पॉइंट बढ़ गया गिर गया, तो कौन सा रूल मेरे को देखना है, वो स्टिकी डेल्टा रूल है, एकदम क्लियर.
उसके बाद इस स्टिकी डेल्टा रूल में आपको टाइम वैल्यू को इम्पैक्ट डालना है, अगर इफ यू आर कीपिंग इट फॉर नंबर ऑफ डेज। ठीक है, स्ट्रैटेजीज में बुलिश, बेयरिश, नेकेड ऑप्शन करना आप लोग पहले से जानते थे। बुल स्प्रेड स्ट्रैटेजी जो है, बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड, ठीक है, बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड कॉल से भी बनाना था, पुट से भी बनाता है। इफ यू सी द वीडियो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इफ यू वांट द इनकम, मैंने बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड के लिए ये बताया था कि आपको लगता है ये प्राइस नहीं आ सकती वर्सेस आपको लगता है ये प्राइस आ सकती है, इन दोनों के लिए अलग ट्रेड है। 10,000 नहीं हो सकता और 10,800 हो सकता है, इन दोनों के लिए स्प्रेड अलग तरीके से बनता है। सो यू कैन गो बैक एंड सी द वीडियोस देयर, एंड बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड आप उस हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। चूज ऑफ स्ट्राइक प्राइस, चूजिंग ऑफ स्ट्राइक प्राइस, स्टार्ट अगर ओटीएम चूज करना है, इफ एनी ऑफ योर स्ट्राइक प्राइस इज यूजिंग ओटीएम, तो चूज बिटवीन 0.35 टू 0.2 डेल्टा। जिसको बड़ा मूव चाहिए वो 0.2 डेल्टा लेगा, जिसको छोटा मूव चाहिए, मतलब छोटे मूव में ही उसको पैसा कमाना है, वो 0.35 डेल्टा लेगा। इन दोनों के बिटवीन में लेना है, 0.2 से लेके 0.35 डेल्टा के बीच में लेना, सो दैट यू वांट द अंडरलाइन टू बिकम 0.5 डेल्टा। नाउ यू आर नेगेटिव में भी 0.35 टू 0.2 के बीच में डेल्टा जिसका रहेगा, ट्राई टू चूज दैट। स्ट्राइक प्राइस चूज करने का वो एक क्लैरिफिकेशन दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, वेर यू वांट द अंडरलाइन टू कम टू योर नियर स्ट्राइक प्राइस। आप 0.35 लोगे तभी तो वो 0.5 पहले आएगा, 0.2 लोगे तो 0.5 आने के लिए उसको पहले 0.35 आना पड़ेगा, फिर 0.5 आएगा। सो स्ट्राइक प्राइस चूजिंग इससे आपका हो जाएगा। नहीं समझ में आता है कि मेरा बुलिश व्यू है, मेरा बेयरिश व्यू है, सीधा सा बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड मार दो। हमें भी a lot of times in Nifty I do a bull spread, bear spread। नहीं समझ में आता एकदम क्लियरली कोई चीज है तो उसको बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड मार दिया एंड थिंक अबाउट इट लेटर। नेकेड कॉल पुट ऑप्शन आप लेते ही हैं। वॉलेटाइल मार्केट के लिए स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल, स्प्रेड, रिवर्स वाला, आई मीन आई विल नॉट से रिवर्स, यहाँ पे स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल आप कर सकते हैं। फ्लैट मार्केट के लिए स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल है ही है। शॉर्ट करने क्या एंड क्या है, आयरन कॉन्डोर है। Other two strategies that we discussed was butterfly and calendar spreads. Remember, these are not the end of the strategies। ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी का एंड हो गया, बहुत सारी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रिप, स्ट्रैप, आयरन बटरफ्लाई, XYZ, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। Once your objective is clear, मतलब आपको अपना you will read about them and you will get it। मतलब now these are the basic ones। ये बेसिक आपके क्लियर हो जाते हैं। बेसिक इन द बेसिक एंड एडवांस, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रैटेजी आपका अगर क्लियर हो गया,
कि कैसे बटरफ्लाई में कॉल पुट में पैसा आएगा, कैसे बटरफ्लाई में कॉल पुट में पैसा लगेगा, तो बटरफ्लाई का उससे आप कॉन्डर बनाना है, तो दैट्स नॉट मतलब समथिंग यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट कि ये मेरे से नहीं बनेगा. वंस यू आर कंफर्टेबल विद बटरफ्लाई, कॉन्डर भी इजीली बनेगा. सो द नेम ऑफ द स्ट्रेटजी विल कीप ऑन चेंजिंग. आप भी अपना चाहे कोई स्ट्रेटजी बना सकते हो. अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोलेटिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रीक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेटजी इज इंपॉर्टेंट कि किस स्ट्रेटजी में कब पैसा आना चाहिए, कब पैसा लगना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है. जो कि every single strategy when we discussed about it. कैसे कैसे धीरे धीरे करके पैसा आएगा, कैसे कैसे धीरे धीरे करके पैसा नहीं आ सकता. ठीक है. As far as observations are concerned, remember as I mentioned this in the first class also, options looks tougher because they don't have charts. They don't have charts, they don't have annual reports. There's nothing else. चार्ट्स होते तो टेक्निकल एनालिसिस की तरह इतना इजीली देख सकते थे. एनुअल रिपोर्ट्स होती फंडामेंटल एनालिसिस की तरह अपनी कंपनी के बारे में चेक कर सकते थे. बट दे डोंट हैव ईदर ऑफ देम. दैट इज व्हाई यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वेशंस. Otherwise, it's actually the easiest thing to trade. Volatility बढ़ेगी तो उसको गिरना तो पड़ेगा ही after the event. Event खत्म हो गया, उसको गिरना तो पड़ेगा ही. You will see in front of you कि ऐसा होगा ही होगा. How very few times you are confident on a direction. You may be good, but direction पे हर आदमी it means the strategy. Ankit has a question, not question, suggestion. What? It means the strategy you explained are the base. Once the base is clear, we can play with many strategy using these bases. Yes, Ankit, आप इसको अपने तरीके से modification, deletion कर सकते हो. But do it with a bit of experience. एक बार थोड़ा experience हो जाए of this. Then do it. Otherwise पहले दिन से experiment करने में क्या कि वो confidence नहीं आएगा. और if it breaks the confidence, जैसे there is one trade which someone explained me. Can you guys interpret what the trade is? He bought the put of 900. कितना चल रहा है अभी? 940. रिलायंस का 940 का पुट लिया, फ्यूचर लिया, फ्यूचर लॉन्ग, है और सॉरी पुट में भी लॉन्ग है. एंड ही सोल्ड कॉल्स ऑफ 940. ठीक है. अब वो बताओ, ये बुलिश ये आदमी रिलायंस में बुलिश है या बेरिश है? मतलब ये 3 ट्रेड किए उसने, उसने 3 ट्रेड किए हैं. नाउ कैन somebody please tell me whether this person is bullish or bearish in Reliance? Bullish. Okay, someone is saying bullish. First 2 trades are for bullish. First 2 trades are for bullish. Call खरीद लो या put और वो put बेचो, put खरीदो. First trade, combined trades. I'm talking about the combined trades. कब उसके पैसा आएगा? रिलायंस में रिलायंस बढ़ने से पैसा आएगा या रिलायंस गिरने से पैसा आएगा? So when will he make money? Reliance becomes क्या? कब वो पैसा?
Right, Archana ji, this is an arbitrage. You remember that put call parity? So we did put call parity. This is P plus F minus C. So it has to be 0. So कभी कभी आपने को लगता है आपने पुट खरीद लिया फ्यूचर खरीद लिए तो अपने बुलिश हैं, बाद में जाके वही कॉल बेच दिया तो भी so sometimes someone can make this kind of mistakes also. You don't know, I don't know, but we should not एक बार रियलाइज हो जाता है कि क्या यही अगर 940 की जगह यू सेल ए 960 का कॉल, then it becomes a bull spread. Then it actually becomes a bull spread. अगर यहाँ पे 960 का कॉल मैं बेच देता हूँ 940 की जगह, then it becomes a bull spread. 940 का कॉल लॉन्ग हो गया, 960 का कॉल शॉर्ट हो गया. मैं बहुत इजीली ये ट्रेड के बारे में ये बुल स्प्रेड बोल सकता हूँ, बट आपको ये बोलने के लिए, ये समझने के लिए थोड़ा सा 5 मिनट का समय लगेगा. ठीक है, मेरी तो रोजी रोटी यही है, बट आपको थोड़ा सा और एक्सपीरियंस चाहिएगा इसको कहने के लिए. सो किस स्ट्रैटेजी को कब लेना है, क्या लेना है, बटरफ्लाई कब है, जब एक्सपायरी पास में आ रही है. रिमेंबर आई टुक अ फोर्टिस का बटरफ्लाई, वी एक्सप्लेन इन द क्लास, बट फोर्टिस डिडंट मैच्योर, तो मेरा 60 पैसा का नुकसान हो गया. वो मैच्योर का मतलब हुआ 145, 150, 155 का मैंने फोर्टिस लिया था. फोर्टिस एक्सपायर्ड बिलो 145, सो मेरा 60 पैसा का नुकसान है, बट आई नो इट कि 60 पैसे नहीं, अगर पैसा आता तो वो पैसा अच्छा आ सकता था. इन द सेम वे यू कैन टेक दोज व्यूज एंड ट्रेड इट, कि व्यू कितना स्ट्रांग है, व्यू में कितनी स्ट्रेंथ है. ऑब्वियसली फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है और आप अपने बुल स्प्रेड कर रहे हो तो उसका डेल्टा 0.15 या 0.2 होगा, तो फ्यूचर की स्पीड से तो आपके पैसे आएंगे नहीं, उतनी स्पीड से तो पैसे आएंगे नहीं. तो इसकी पैसे की स्पीड 20% रहेगी कंपेयर टू दिस फ्यूचर्स. तो अपनी एक्सपेक्टेशन को भी उतना ही रखो. क्लियर? बहुत जन लॉन्ग कॉल्स लॉन्ग पुट्स में बिलीव करते हैं. आई हैव नो कि मेरे को इंडेक्स में ट्रेड करना है, लॉन्ग कॉल करना है, लॉन्ग पुट करना है, एकदम नो ब्रेनर ट्रेड्स जो होते हैं कि मेरे को इंडेक्स यहाँ पे मंदी लगती है, इंडेक्स यहाँ पे तेजी लगती है, और एकदम क्लियर व्यू मिलता है मेरे को. सो गो लॉन्ग इन कॉल्स, गो लॉन्ग इन पुट्स, गो शॉर्ट इन कॉल्स, गो शॉर्ट इन पुट्स, डू इट इंट्राडे और ओवरनाइट. बट आपका व्यू क्लियर है ना, व्यू क्लियर है तो आप उसके बाद ऑप्शंस को यूज करो. दैट इज फाइन, दैट इज परफेक्टली फाइन. 1, those who wants to day trade, एक होता है कि मेरे को दिन भर स्क्रीन के सामने रहना है और मेरे को देखना है और मेरे को ऑप्शंस में ही ट्रेड करके सुपर बनना है. There is one another trade that I explained yesterday, which was punching out ratio trades. One is ratio trades, आप ratio trades कर रहे हो, आप उसको पंच करके इन एंड आउट कर रहे हो, और दूसरा that buying at 0.3 पैसे and selling at 0.35 पैसे. Do it in a big lot size जहां पे आपको पॉसिबिलिटी है. अगर कर सकते हो तो ये करो, जो कर सकता है. इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू ऑब्जर्व. इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत डीप चाहिए होता है. ये करने के लिए बहुत डीप का ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है. थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा डीप का ऑब्जर्वेशन हर एक आदमी के लिए सूटेबल नहीं है. आपके पास समय नहीं है तो ये नहीं करना चाहिए. समय नहीं है तो नहीं करना चाहिए. कल के लिए आपको इन्फोसिस को ऑब्जर्व करना है. और मैंने एक चीज बताई थी आपको, मार्केट वॉच को कैसे लगा के रखना है. मार्केट वॉच में आप किसी भी XYZ स्टॉक को लगाते हो तो उसका OTM कॉल्स, जैसे ये यहाँ के कॉल्स हो गए, ये सारे कॉल्स आपके लगे रहने चाहिए. निफ्टी लगा है, निफ्टी के ये कॉल्स 10,400 से लेके 10,800 900 तक के कॉल्स लगे हुए रहने चाहिए. फिर 10,500 से लेके 10,000 तक का पुट रहना चाहिए, या 9,800 तक का पुट रहना चाहिए आपके पास. वो आपके सामने लगा हुआ रहना चाहिए. द डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क वो आपके पास रहना चाहिए. दे हेल्प इन ऑब्जर्विंग थिंग्स. उसका OI अगर आपके बगल में तो वो लगा लो. अगर आपका मार्केट वॉच वो अलाउ नहीं करता है तो निफ्टी NSEindia.com खोल लो. NSEindia.com खोल लो, उसको रिफ्रेश करते रहो, उसमें देखते रहो, बट ऑब्जर्व करो.
ऑब्जर्वेशन का बेस्ट तरीका क्या है? अगर याद नहीं रहता है उसको स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स द बेस्ट वे। टेक द स्क्रीनशॉट, उसका फ्यूचर्स का प्राइस भी आ जाएगा यहाँ पे ऊपर में, एंड उसके ऑप्शन के प्राइसेस भी आ जाएंगे। दैट टू मी सीम्स द बेस्ट वे। शाम को बैठ के उसको एनालाइज करो। In the first 6 months that my learning days, I used to track the volatility for each and individual strikes, the data for each and individual strikes, the prices of each and individual strikes as much as possible. Learned through the internet, through my mentors, क्या क्या चीजें होती है क्या नहीं होती है, and then I tried to apply them, they work, and that is brought me here so far till date. So I leave it up to you. You might be having a lot of questions in your mind. So I understand these are the only takeaways. Another takeaway that I wanted to tell you was ट्विटर। अच्छे से यूज करोगे, बहुत ज्ञान बढ़ती पड़ा, बहुत ज्ञान बढ़ती पड़ा। एप्लीकेशन वाला ज्ञान, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो वैसा ज्ञान बढ़ती पड़ा। आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टू यू गाइज। Now you guys are I don't know how happy or how कितने आप लोग पक गए होंगे, but had a nice experience with you guys. You will be in the WhatsApp group. In couple of days we will be transferring you into a larger WhatsApp group. Those who can come to Calcutta on the 3rd week of this Saturday, that is 21st, we will be having a एल्यूमिनाई जो पास स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक सेशन रहता है हर 3rd वीक ऑफ सैटरडे इन दी कैलकाटा सॉल्ट लेक, सो यू कैन कम एंड जॉइन देयर। यू विल बी एल्यूमिनाई नाउ फॉर द ऑप्शंस। वहाँ पे हम ट्रेड डिस्कस करते हैं, नॉट नेसेसरली कि हम सिर्फ ऑप्शंस डिस्कस करें, ट्रेड डिस्कशंस हो रही है कि मेरे को ये तेजी लग रही है, मंदी लग रही है, वॉलेटिलिटी कैसा लग रहा है, वॉलेटिलिटी लेना चाहिए बेचना चाहिए, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड देयर। सो दैट इज हाउ दैट प्लेटफॉर्म इज कि मेरे को ये कोडिंग नहीं समझ में आ रही है, एमी ब्रोकर अच्छा लग रहा है, मेरे को पाइथन में कोडिंग करनी है, सो वी डिस्कस थिंग्स देयर इन 10:30 or 11 morning. Okay, so this is what in the Calcutta group we do. Due to limitation of physical location we cannot go anywhere else, and there are no recorded session for that. And you will be in the larger WhatsApp group where I'll be most probably more silent than other people. That's more silent group than other groups. वहाँ पे options के बारे में lot of people discuss a lot of things. You, I guess, will be benefited out of it. Let's see what happens next. That is all from my side. Now it is up to you to ask questions. Questions है तो पूछो यार। वीडियो देख के अगर क्वेश्चंस पूछने तो yes, that is a very good way. Otherwise you can keep on asking.
when I was talking about delta, which delta I am talking about? Sangeeta ji, you had this question 0.25 buy and 2.35 sell. When I was talking about delta, that was delta I was talking about. So let's say 0.21 को मेरे को बाई करना है और यहाँ पे कोई 0.3 का डेल्टा होगा तो मैं उस 0.15 का 1 का डेल्टा होगा तो मैं उसको सेल करूंगा. कितना डेल्टा बेचना है? लेट्स से 0.21 आई बॉट एंड मेरे को 0.12 का बेचना है, 0.09 डेल्टा लॉन्ग रखना है. ये मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव सब होता है. ये हो गया मेरा डेल्टा. दिस आई नीड टू बी पोजिशनड इन. अभी इसमें 10,650 नहीं है तो नहीं तो वो भी होता. Okay, so delta that I am talking about is this. You don't need an Excel sheet for that. You don't need an Excel sheet for that. You can do it in the option calculator itself. ये Excel sheet आपको दे दी जाएगी. ये Excel sheet आपको मिल जाएगी. Remember, this is someone else's work. This is not my work. Excel sheet वाला. In fact, a lot of theory which we have explained are from the internet. As you see, Zerodha, Tasty Trade, option alpha, this guy, option trading tips. So these are the places I have learned from. कोई ऐसी चीज नहीं है कि मेरे को वो नोबेल प्राइज जिसने जीता था उसी ने सिखाया. I didn't learn from those guys. So these are the places I have learned from, and that is what I am explaining you. Best places you can learn from. Now delta on NSE. Okay, NSE bid and ask. Okay. NSE bid and ask. NSE bid and ask जो 0.25 और 0.35 का जो सेल था उसको ट्रेड करने के लिए कल आप एक ऑब्जर्वेशन करो. ये जो ट्रेड है 5 पैसे का जो ट्रेड है, इसको कल आप ऑब्जर्वेशन करना है. इन्फी 1120 से नीचे खुलना चाहिए. इन्फी 1120 के नीचे खुलना चाहिए. इन्फी का 1 लाख रुपए का मार्जिन है. 1 लाख रुपए का मार्जिन है इन्फोसिस में कोई भी कॉल ऑप्शन बेचने का. दिन कितने बचेंगे? 11 दिन. 12% के हिसाब से मेरा कितना ब्याज है वो इसका ब्याज निकल जाएगा 0.12 इन 11/365 विच इज 360 रुपीज. कितना ज्यादा है? 1 लाख रुपए. हाँ, 1 लाख रुपए का 360 रुपीज ब्याज है. तो 360 रुपीज इज हाउ मच ऑन इनफी लॉट साइज? 60 पैसे. तो 60 पैसा बेचने वाले के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. 12% पर एनम का अगर मैं मानूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. तो क्या इन्फोसिस का 1200 का कॉल भी, इन्फोसिस 1120 खुला है तो 1200 1250 कोई भी कौन सा कॉल 60 पैसे के नीचे चल रहा है? 1200. यू स्टार्ट वॉचिंग डीप ओटीएम कॉल्स एंड लुक एट देयर बिहेवियर. वहीं पे आपको 50 पैसे 30 पैसे का मिलेगा. एंड लुक एट देयर लो प्राइस एंड लुक एट देयर हाई प्राइस. लो प्राइस भी देखना और सुबह 9:15 से उसको ऑब्जर्व करना. सुबह 9:15 से 1 सेकंड से पूरा ऑब्जर्व करना है. अगर आपका कोई इन्फी में ट्रेड नहीं है और न लेने का मन है तो एटलीस्ट ऑब्जर्व दिस. ठीक है. मेरे ख्याल से कोई भी प्राइस 60 पैसे से नीचे नहीं जाना चाहिए 1300 के बाद. मतलब 1250 1300 के बाद कोई प्राइस चला जाए तो चला जाए, 1250 के बाद जाए ठीक है. 1200 1230 तक कोई भी प्राइस 60 पैसे के नीचे नहीं जाएगा. What my point? So if you are a buyer at 60 paise, this is my observation. If I am a buyer at 60 paise, so there is a possibility that it will get covered by 70 paise. I'll buy X number of quantity. 60 पैसे में मेरे खरीदने के अगर मैं 1 लाख शेयर नहीं खरीदता हूँ, if I buy 1 lakh shares at 60 paise, I'm giving less margin than the 1 lot sell. 60,000 रुपए का मार्जिन लगेगा 1 लाख शेयर में. 60,000 रुपए मेरे लगेंगे. एक 5 पैसा भी मेरे पास आता है तो आई एम मेकिंग 5,000 रुपीज एंड मेरा मार्जिन खत्म. एंड यू विल मेक मनी इन दैट. 60 पैसे में लिया 65 पैसे में बेचा. रिमेंबर, इट्स नॉट इजी. आई एम अगेन सेइंग टू ऑब्जर्व इज इंपॉर्टेंट. ऑब्जर्व कर लो आप अपने पास, एक बार देख लो. इन्फोसिस के बाद टीसीएस भी होगा और टीसीएस के बाद फिर एचडीएफसी बैंक भी होगा, एक्सिस बैंक भी होगा, सब कुछ होगा. पर ऑब्जर्व करना इस चीज को. एक बार ऑब्जर्व कर लोगे, हो सकता है नेक्स्ट बार आप मेरे से बढ़िया कर लो.
तो पहली बार कम से कम ऑब्जर्व करना, सीधा अटेम्प्ट मत लेना, पहली बार ऑब्जर्व कर लो एंड दूसरी बार आप इसको अटेम्प्ट लेना। दोज हु आर इंटरेस्टेड, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो ठीक है, दैट इज फाइन। बहुत जनों को 5 पैसा नहीं हजम होता, क्या मजाक कर रहे हैं सर, ठीक है, टू ईच देयर ओन। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल से 3 घंटे का सेशन इज बेटर देन 4 घंटे का सेशन। 3 घंटे में फिर भी कुछ शांति रहती है, 4 घंटे में हालत खराब हो जाती है। अर्चना जी, 1 लाख शेयर्स मीन्स more than 100 lots. And why not? My question is, you observe it first. Observe करो, फिर आप इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसका लो प्राइस क्या था, कैसे वो रिएक्ट किया, कितना रिएक्ट किया, ऑब्जर्व दिस फर्स्ट। आपके पास कल का दिन है ये, कल फर्स्ट ट्रेडिंग आवर्स में अगर आपके पास कोई काम, मतलब बहुत आपके पास हो सकता है कुछ सुबह सुबह आपके पास कुछ एग्जीक्यूशन करने को, पर नहीं है कुछ एग्जीक्यूशन करने को, तो ये देख सकते हो आप, एक ये चीज देख सकते हो, और एक इसका इन्फोसिस तो पूरा पूरा देखना है। वो देखने से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि स्टेडल वैल्यू 60 का 40 हो गया या 60 का 45 हो गया या 17 रुपए का कॉल सब 1 रुपया आएगा, तो ये बीच का 16 रुपए गया कहाँ? वो गया तो गया, जिसके गया गया, जिसने 17 रुपए में कॉल लिया था उसका गया 16 रुपए, तो गया गया, तो उसके लिए सोचने का नहीं होता है। फर्स्ट आवर्स में, फर्स्ट 5 मिनट में किस हिसाब से वो ट्रेडिंग चालू होती है। बहुत बार हो सकता है आपको प्राइस को फ्रीज ही मिले, पहले अगर इन्फोसिस 7-8% डाउन होगा तो ऑप्शन का प्राइस हो सकता है आपको फ्रीज मिलेगा, वो फ्रीज खुलेगा, एनएसई एक्सचेंज खोलेगा, उसके बाद क्या रिएक्शन आता है वो भी एक देखने वाली चीज है, तो watch that. These are some things which a person cannot teach you, can ask you to observe, क्योंकि हम लोग वहीं पे रहेंगे। मतलब हो सकता है वो आपको 60 पैसे में जब बहुत बड़ी बड़ी बिड देखेगा, हो सकता है हम ही लोग में से किसी की हो, बट ठीक है, लेट्स फॉरगेट इट। बट ये चीज को ऑब्जर्व कीजिए, देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट्सएप ग्रुप है ये, वहां पे देखेंगे। और क्या था, बिड एंड आस्क ट्रेडिंग कैन वी डू इन बिग लॉट्स? संगीता जी, लॉट बिग तभी किया जाता है जब आप कॉन्फिडेंस आपका हाई होता है अबाउट द ट्रेड, अदरवाइज लॉट बिग नहीं कर सकता कोई। लॉट आप तभी बिग कर सकते हो, स्केल अप इज द toughest thing in this market, and those who can scale up easily, मतलब जो स्केल कर चुका है या करना इजीली है उसके लिए ड्रॉ डाउन देखना, मतलब बड़े बड़े लॉस देख के बड़े बड़े प्रॉफिट देखना, उसके लिए जिसके लिए इजी है इज कूलेस्ट गेट, बहुत सही होता है उसके लिए, ठीक है। सो बिग लॉट्स स्टार्ट विद स्मॉल, यू कैन इजीली गो बिग। एनीथिंग एल्स? One thing that I ask all the students to do after the class is over, you must have got the feedback form by now. Writing good things is okay, you can write good things, obviously that will boost my morale, but do write the things that you didn't find in the class. Kya cheez were missing? Obviously there were limitations also from my side, from your side also, but क्या चीज ऐसा था जो कि आपको नहीं मिला, और या यू वांट समथिंग मोर ऑन दैट, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव, अगर इफ पॉसिबल वी विल ट्राई टू गिव इट ऑन द whichever medium we can,
So feedbacks are important for anyone, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, in any profession feedback is important. We seek at least critical feedback जरूर दीजिएगा. Don't keep it to yourself. Before you say it to anyone else, say it to us. Okay. क्लास वीडियोस में आपसे कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से आप कब पूछ सकते हो. व्हाट्सएप ग्रुप इज द बेस्ट. उसमें एक अच्छी बात क्या होती है कि आपकी कंफ्यूजन किसी और की कंफ्यूजन भी हो सकती है, तो वहां पे एक रिप्लाई कर सकता हूँ. रिमेंबर क्या है कि अभी तक मेरा क्या होता है, जब तक गाड़ी बिकती नहीं है ना तब तक वो सेल्समैन पीछे पीछे दौड़ता है. तो आफ्टर सेल सर्विस में आपको दौड़ना पड़ता है. इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट वे. पॉइंट इज थोड़ा सा डिलेड रिप्लाई पे हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि थोड़ा डिलेड रिप्लाई हो. वंस यू विल बी इन दी लार्जर ग्रुप तो मेरा रिप्लाई का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा. देयर आर पीपल हु आर मच आई मीन दे आर गोइंग इन एंड आउट ऑफ द ऑप्शंस डेली बेसिस, तो वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे ऑप्शंस में. सो वहाँ पे तो आपकी कोई भी डाउट्स होगी वहाँ पे आपकी झट से इजीली सॉल्व होने का चांसेस है. As far as I am concerned, I will be trying to solve all your doubts. WhatsApp group is easy. You can post your doubt, and if somebody किसी और को भी फायदा हो सकता है. Otherwise, आपके पास मीडियम है ही है कॉल करने का. जहाँ बात कर लेंगे अपने कि किस समय कॉल कर सकते हैं, उस समय we will discuss कि कहाँ पे किस समय बात हो सकती है. कभी कभी आपके एजेंसी होती है, कभी हमारे एजेंसी होती है, तो यार वो थोड़ा सा एक you adjust. There are couple of people I have not called just till now. मैंने बहुत जनों को कॉल किया था, बहुत जनों को कॉल नहीं किया है. So in the next week I am thinking of calling those who I have not called. Some people have not received the calls, so I'll try to call them back again, and we will discuss what is their plan, what is your plan, like that. Nothing more big about it. Clear? Anything else? So like if any bank, like a BDC bank results came on this thing, that if it is posted good results, then do we expect a good directional move in the stock immediately? The question is, if DCB Bank का result है और DCB Bank reports good result, should we expect a good move in that? That's why I mentioned कि result के पहले जो move होता है वो बहुत जनों वो it captures a lot of things. अगर DCB Bank पहले से बढ़ चुका है, मतलब रिजल्ट के पहले बढ़ चुका है और खराब रिजल्ट पोस्ट किया, then it's a good time to act. बट साथ में अगर सेम ठीक रिजल्ट पोस्ट किया है तो फिर वो डाइसी हो जाता है. सुपर्ब रिजल्ट पोस्ट किया तो फिर रिजल्ट एनालिसिस इज a totally different exercise. प्री रिजल्ट ट्रेडिंग एंड पोस्ट रिजल्ट ट्रेडिंग इज डुएबल, बट फॉर द रिजल्ट ट्रेडिंग वो बहुत ही ज्यादा उसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं. अब इन्फोसिस इतना तेज हुआ 5-6% इन द लास्ट वीक, लास्ट 2 days. आई मीन रिजल्ट आया फिर से वही भाव आ गया 1100 वाला. टीसीएस इतना सुपर तेज हुआ. सो टीसीएस में तो फिर भी एक एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं, टीसीएस का ये 100वां साल है, 100th ईयर है. सो टीसीएस माइट गिव यू सम सरप्राइज, बोनस ही दे दिया, कुछ भी दे दिया, आई डोंट नो. सो दैट कुड बी समथिंग फॉर टीसीएस. That's how things will be in the रिजल्ट्स में के लिए ट्रेड करना. सो रिजल्ट के लिए ट्रेड करना दोनों इज डिफरेंट.
Thanks, Archana ji. Thank you, Archana ji. And Ankit, you have a question ki derivative module apart from, you are a CRTA student, apart from this you have a CRTA module. यार अंकित एक बार support team से discuss कर ले. That will be much better. I have really a very small, little limited idea about it. कि वो क्या चीज़ है और कैसे आपको करना है. तो support जैसे आपको बताएगा, that is going to be. चलो guys, thank you all. Thanks very much for taking such a hectic session on Saturdays, Sundays, on your weekends, attending all the way continuously. Thank you all. Yeah, thanks Wahid. Wahid say thanks to all, keep in good health, make profitable trades. Yes, yes, yes. And similar feelings for all of you. Yeah, thanks for your support and we'll get in touch when needed. Yes, sir. After sales service हमारी रहेगी. Don't worry. अंकित, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ यार. आप बड़े लोगों के साथ सोचो. You are thinking of coming on to team. मतलब you have keep higher aspirations. Keep your aspiration to Mr. Junjunwala. उनके साथ बैठ के ट्रेड करना है सर. चलो, बाय बाय. Thank you everyone. I'm closing the session for all. Bye.